you today's speaker, which is Abhishek from Mama Earth. Abhishek leads growth and specifically on the D2C business at Mama Earth. He's also an IIT Delhi alumni. He's been leading marketing and growth earlier at QMath and at Spinning. So I've worked with him discussed with him back and forth around building this session. And Mama Earth, if you're all aware, is deals at a very large, significant scale. And this is today's time where he decided to sort of we broke that down for all of us in the cohort and what we can take as actionable insights for setting up our own retention processes, systems. I mean, I think we all know intuitively that we should care about retention, but are we doing anything about it? Are we actually strategically putting processes and tracking metrics around it? Is a question we should all be asking, and hopefully today's session will sort of help build on that. So on that note, two things. Please make sure you turn on your videos because Abhishek hasn't seen a lot of you yet. It's his first time with us. And that being said, a round of applause for Abhishek. And Abhishek, welcome to Expert. Thank you, Sharad. Thank you, everyone. I think it's a great opportunity meeting young minds, meeting new founders, and then I love to interact. And quickly starting on the how we increase the repeats, I heard a lot of you guys on Shopify. I'll make sure we cover the Shopify aspect as well. And if you have any doubts, feel free to share the doubts as well. If you need some plugins, if you need some ideas, okay, how to measure that data, particularly on Shopify. I will share that maybe in this session or maybe later in the session as well, so that the actionables items come out of this session and you actually implement in your business as well. So to start with, I just share my screen. Let me know when you're able to see it. Yeah, we can see it. Perfect. Sure. Cool, sounds good. Just to start, just a quick intro. I've worked in a D2C segment for around 5 to 10 years as of now, and worked in a various industries, starting from automotive, edtech. Now I'm more into the CPG industry, and I advise a lot of startups as well. Not just in these industry, I started working on the fashion industry as well. I'm active in general industries as well. I have startup to build a story, what sort of story they should build, how the fund needs to be raised. If they need any help in terms of fundraising as well, I also help them. So happy to interact you guys in terms of those aspects as well. Now coming to the main, why focus on repeat? I think Sharad rightly mentioned that repeat is one of the core matrices जहाँ पे each and everyone should focus just to make sure that की profitability achieve होती है. So just a quick context in terms of data. Average in India, the repeat to get a repeat order as compared to a new order is at cost of 6 to 7 times. And we know that just if we do a marketing on the Google, Facebook, the CPM increases around 10 to 15% each and every year. So जो आपका new acquisition cost है, it will increase in each and every year. And hence the gap between this retention and acquisition will increase a lot. So hence we need to decide that, okay, if you are not able to build a loyal cohort, eventually in future, there might be a case that your acquisition cost will shoot up so much that your whole business will not able to sustain. And hence we need to make sure that this gap decreases and we rely more onto the repeat customers. Moreover, if you provide a good experience to the customers as well, if you provide a better experience to the customers, it also shows that what sort of word of mouth you are getting. So eventually your acquisition cost also decreases rather than just the repeat, because if the word of mouth is a factor for what sort of customer experience, what sort of satisfaction score the customer has, what sort of if they like the product or not. So उस सब का multiple बन के ही पूरा retention बना. If the retention is high, your word of mouth will be high, your acquisition cost will be less. So eventually each and everything will drop down what sort of retention rates or what sort of lifetime value you are having for the customer. We will go in the detail about the retention and the lifetime value, but this is the initial context. Ki one should focus on the repeat cohorts. There are a lot of startups as well. They don't focus much on the repeat, especially into the edtech industry. If you see Byju's, they generally sell for courses for 2 years, 3 years, or 5 years. So we have seen that the Byju's retention rate काफी low थी, 10% to 15% के आसपास थी. So what they have decided, let's not focus on a 3 months or 6 months type of a product. Let's change the product for a 2 months, so that from the first course as well, you are getting a profitability, and वो आपको retention पे rely नहीं करना पड़ रहा है. But that is possible only at a scale like Byju. For a new age startup or a startup, generally
स्टार्टेड रिसेंटली, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतना हाई साइज प्रोडक्ट आप 1 ईयर 2 ईयर के लिए सेल करते हैं. So that's, and again, if you don't want to rely on retention, that's again the first order से profitability करते हैं, but in long term that will not pay much of the benefit to the young startups. So retention is must, and we in Mamaearth as well, in other startups as well, in QMath Spinny, we highly relied on retention. Eventually in Spinny as well, जब हम work करते थे, we made sure customer experience हमारा काफी smooth होता था. About 35 to 40% of our acquisition was happening from referral, because हम first orders पे इतना अच्छा हम experience provide करते थे, हमारी acquisition cost काफी low हो गई थी, and that's how the whole system was built. So coming the part to loyalty करने के लिए हमें क्या चाहिए? Retention तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन retention के बाद भी customer का मेरा loyal हो जाता है, तो उसके लिए हम what should be done? So what at Mamaearth we have built a framework. Ki first step one is to acquire customer. Second is engage the customer, educate karo, bond karo, tell them what the brand is all about, tell them what the what why we stands for, what products we are offering, what categories we are offering. Maybe he or she has interacted with one of the products, and then how the whole framework should be built. And what we have learned, there should be a commitment with the customer. Either the commitment can be in terms of a second order has been placed, because that's a friction ki first order ke baad second order place kar lega. The probability of repeating in the future or the being loyal to the company will be very, very high. There might be a case that this commitment can be replaced to a loyalty program. कि आप उसको loyalty program sell कर देते हैं in the first order or second order. Then is also a case that that customer is also very loyal to you guys. And finally, how the customer can become loyal from a commitment stage. So finally, आप उसको बार-बार आपको spend करना पड़े money to make sure that customer बार-बार आ रहा है मेरे पास. There might be few journeys which are built on those lines, but this is the framework one should build to make sure कि we are targeting not just on acquisition, we are targeting at each and every customer phase. And frankly speaking, I know acquisition is very tough, but making the customer loyal and making the customer repeat is also equally important and tough. One thing you will able to see that in each and every part, satisfaction is the core. During acquisition of the customer, during engagement of the customer, during commitment, as well as the loyal. So if the customer is not satisfied, if the customer is not able to experience the best out of your brand, you might not able to take things in a better way. So satisfaction हर point पे important है. Customer आपको judge करेगा हर point पे. जब आप उससे शायद first ad में interact कर रहे हो, जब आपके वो website पे आ रहा है, जब आपकी maybe app है तो app पे आ रहा है, maybe आपके customer care से interact कर रहा है, maybe आपके social media page से interact कर रहा है, maybe आपका product buy कर रहा है. Each and every point customer will judge you, and and the level of judgment will be very high, starting from first phase to the till he plays the first order, and afterwards as well when you are communicating by maybe by email, SMS, etc. तो satisfaction सबसे core है. और satisfaction के बाद ही customer आपको आगे लेके जाने के लिए या फिर आपको repeat करने के लिए brand prefer करेगा. So first and foremost हमारा satisfaction. So base है इस पूरे model का कि हम satisfaction कैसे build करते हैं. So at the first time when you interact with a customer, जब आप first ad launch करते हैं तो सबसे पहले customer की कुछ expectations होती हैं. You have built some expectations. Let's take an example कि maybe delicious as a category कि fresh meat delivered in maybe 90 minutes, and the customer has placed an order. First, and he has judged on based on some of the reviews from the market, some of the communication from the market or the acquisition channel and everything. And uske basis pe they have defined, okay, what is the perceived quality and what is the perceived value. Agar mujhe value for money mil raha hai nahi mil raha, perceived quality hai ki bhi nahi. And it depends on brand to brand. If your brand is catering the high-end customers or maybe the high value customers, and if a brand is catering to other set of customers, then उसमें काफी differ करेगा. But for each and every brand, as a founders and as a maybe growth leads, you know that ये कहाँ पे focus करते हैं. So depending on that, if you after a first order is delivered or the first interaction is delivered, the customer will decide whether he's satisfied or not. He or she may not be satisfied, and maybe they will give feedback to you. But how the feedback has been taken, it depends, and they will turn loyal or not.
So customer satisfaction is first and foremost. At each and every interaction, वो आपको उस level पे पूरा interact करेंगे. Now, as a as a leaders, as a founders, how we should build the matrices कि इसको आप judge कैसे करें, measure कैसे करें कि whether I am on a right track or not. तो first and foremost है कि हम 3 ways में इसको judge करेंगे. एक तो हम काफी जगह से customer से पूछेंगे NPS क्या है, social sentiments क्या है उस पे, and reviews क्या है different platforms से उसके basis पे हम कर सकते हैं. So we have defined one term and the very prominent in the market is net promoter score. And after placing an order, you should ask whether you will recommend this brand to your friends and family. And you can give a scale from 0 to 9 or 1 to 10. And based on that, one must decide, okay, कि क्या judgment है. पहला हो गया placing an order. It is the your judgment for your tech stack. क्या communicate कर रहे हैं आप, क्या ad था आपका, उसके basis पे आपको idea लग जाएगा कि यार मेरी इस funnel पे क्या interactions हो रहे हैं. Also, guys, feel free to pour your comments, and if you have any doubt, I will make sure I will answers your doubt during the sessions only, so that हम एक section को cover करें, उसका doubt cover कर लेते हैं. So feel free to post your doubts in the chat section. I will pick them as the one section is completed. Also after delivery, because you guys may be competing. So in the category like fashion, in the category like personal care, currently 10 minutes delivery is also in place. And Amazon, Flipkart are also going into 2 hours delivery. They are already into the same day and the next day delivery. So after, and it also comes to a fact that what's the experience for your delivery agent. So वहाँ पे भी काफी चीज आता है, because as a company ये people will not think ये Blue Dart से आ रहा है, people will not think ये delivery से आ रहा है. It is that Mamaearth order is coming, and how the agent has behaved with you or behaved with me, it reflects on what the brand proposition and the brand values are. तो वो एक डिलीवरी एजेंट के लिए ऊपर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि ब्रांड ने मुझसे रूडली बात करी है या फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. सो डिलीवरी एक्सपीरियंस इज आल्सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ऑल्सो आफ्टर 2 weeks of use, वो आपका प्रोडक्ट का बेनिफिट आ जाएगा कि इफ इट्स अ पर्सनल केयर प्रोडक्ट, इफ इट्स maybe food, so they will get to know, you will get to know that okay, after 2 weeks of usage, how better they are able to perceive ki what sort of value it can create, kya usage hai, whether the packaging is right or not, food is tasting right or not, food kitna fresh hai, whether the product is providing the required benefit or not, maybe in terms of emotional benefit, maybe in terms of the tangible benefit which you guys have promised. तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा. Maybe in the case जैसे maybe anti acne कोई product है, it might take time to actually delivery of that product, but initial 2 weeks में एक उसको एक satisfaction मिलना चाहिए. अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो word of mouth और वो सब कभी भी introduce करना difficult होगा. And any other touch points as well, if you're interacting with the maybe the customer care, the customer is interacting, if they are interacting with some other point, वहाँ पे भी आपको I think एक touch point create करना चाहिए, measure करना चाहिए कि customer क्या feel कर रहा है, whether he is satisfied or not, whether what sort of sentiments they have. Okay, so these are the 4 things. I will share the benchmarks as well in the next slide कि इनके benchmarks क्या होना चाहिए at your level, how one should build or what you should aim for. Second आते हैं sentiments पे. So generally what we have seen that every 3% out of 4 check reviews at social media, whether it's a YouTube, whether it's a Facebook, whether we by doing a Google search, and we have seen that the review की जो search volumes वो काफी drastically increase करती है when we run a campaign. So reviews and rating are first and foremost. कि अगर आपके negative reviews है, don't worry about it, work on the reviews. Make sure you bring more positive reviews. Negative review हटा के ज़्यादा फायदा होता नहीं है, because if the product is not right, it will come eventually in the over the next couple of months as well. But work on the review, work on the product, work on your services. What I have seen for initial startups, generally service related, maybe delivery related, maybe price related, maybe packaging related, काफी feedback आते हैं, due to which the product is perceived as a lower quality and the brand is perceived or as a lower quality. So take that feedback from the customer. We at Mamaearth has a policy that, or maybe as a process that each and every employees calls at least 40 customer every quarter, and we are around 300 to 400 members in a corporate in a
corporate office. We call customers, we interact, we check कि क्या customer feedback है, so that each and every vertical and each and every part of our team knows कि customers क्या feedback दे रहा है, and at that point of time, whether it's a new production team, a new product development team, whether it's an engineering team, whether it's a maybe revenue team, whether it's some other team, they know कि customer actually feel क्या कर रहा है, and they should know कि मैं if I'm doing some work, value add भी कहूँगा. इनिशियल फेज थोड़ा टफ था. वी आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक, यार ये प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है, एंड वी एज अ टीम आर वेरी फ्रैंक. हम टाउन हॉल में ये सब डिस्कस करते हैं कि ओके व्हाट सॉर्ट ऑफ फीडबैक द कस्टमर इज हैविंग, एंड वी मेक श्योर नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर कपल ऑफ क्वार्टर्स में उस प्रोडक्ट का फीडबैक इंप्रूव हो. एंड people feel such a confidence that यार especially the new joiners, जब वो कस्टमर से बात करते हैं बोलते हैं मामा this product is really superior, I have seen the impact, I have seen everything. So आपका जो एक तो एम्प्लॉय जो में फीलिंग्स आती हैं, जो इंटरेक्शंस आते हैं, इज रियली हाई एंड इट्स रियली इंक्रीज द बेनिफिट. सेम गोज कि आप सोशल मीडिया पे भी सेम कंटेंट डिलीवर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर दे नो कि आई शुड पुट सब कमेंट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड अगर आप बोल भी देते हो एंड इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू, यू जनरली पुट द सोशल मीडिया रिव्यूज एज वेल. कभी आप ऐड देखते हैं तो वहां पे भी कमेंट डाल देते हैं, इट इंक्रीज योर एंगेजमेंट एज वेल. So make sure you track your social media, social sentiments as well. And lastly, if you're on the e-commerce website, your own website, there are a lot of reviews. Generally, what people do is they hide negative reviews, approve नहीं करते अपनी खुद की website पे and everything. I think those should not be done until and unless they are not genuine. Otherwise, the first and foremost thing for your own website should be transparent. Negative review में post it, improve करते हैं product, rather than not posting the reviews and making sure कि हम उससे ही कंटिन्यू कर रहे हैं. What people will do, they come to your website, check the products, but they check the reviews on the other website, maybe Amazon पे, maybe कहीं और पे. So वो नहीं करना चाहिए. So first and foremost pillar is the customer satisfaction. अगर वो नहीं हो रहा है, then I think you need to double check what sort of brand you want to build, what sort of product you want to build. This does not include the brand pull. Maybe brand sentiments अलग है. जैसे मामा अर्थ में we work on a brand causal. We have a brand with a purpose. Like purpose can be defined that we plant a tree with each and every order. We work on our benefits of the customers as well. We believe in a toxic free environment. वो इसमें नहीं है. So वो उसको हम differently थोड़ा build करने का plan करेंगे. वो इस पूरे मैंने इस पूरे सेक्शन में नहीं रखा है. And we can discuss it later because it differs from brand to brand. Maybe fashion brand उस चीज brand pull को improve नहीं कर पाएगी, but maybe a food brand, maybe some other personal care brand can include, and that is an added benefit of your customer satisfaction. We have seen that as a toxic free brand, as a made safe brand, कस्टमर कई बार आपको थोड़ा सा लीवे दे देते हैं व्हेन यू हैव अ पर्पस अटैच्ड टू इट कि यार एक पेड़ तो लगाया था मेरे लिए, सो ठीक है. कई बार गड़बड़ हो जाती है बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट 100% एक्यूरेसी से तो हम काम नहीं कर सकते, एंड वी लॉन्च अ प्रोडक्ट, वी टेस्ट अ प्रोडक्ट अ लॉट, बट दे माइट बी अ केस दैट किसी कस्टमर के लिए वो सूट नहीं कर रहा है. मे बी कोई सेंसिटिव स्किन है तो सूट नहीं करेगा, बट कस्टमर्स को ये नहीं होता कि यार मेरी सेंसिटिव स्किन है, बिकॉज इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है सेंसिटिव स्किन की. इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट क्या होता है. सो वो यूएस में इतना है, एंड एज एन स्टडी 40% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, बट इंडिया में आइडिया नहीं है. सो पीपल डोंट नो, एंड अगर आप उनको बोलते भी होगे कुछ आप में होगा तो दे विल रिटेलिएट. So just ask for an apology. Ask, okay, this is, and it will help if your brand has a purpose, if your brand has a brand code. So this is the whole customer satisfaction measurement. And if we go to the next slide, this is how the NPS is measured. You ask on a scale of 1 to 10. 1 to 6 are your detractors, 7 to 8 are your passives, and maybe neutral, and 9 to 10 are promoters. And you decided net promoter कितने हैं आपके, total sum of 9 plus 10, and we remove detractors from 1 to 6, and जो भी आपका score आएगा उसको हम बोलते हैं net promoter score. It's very prominent in the market and it's very standard term. So this how you should measure your the other ways as well. NPS हो गया, ratings हो गया, etc. But net promoter is takes care of the most number of things as well. So this is one of the matrices we should evaluate for. Yeah. Coming to the benchmark, so after placing an order, your NPS should be greater than 60. अगर वो नहीं है तो there are some issues. Initial brands 30 to 40 के stage पे होती हैं.
बट आप थोड़े थोड़े tweaks कर ले. Tweaks can be in two types. Your website speed. Your website should load faster. Generally, what I have seen, your website 4 seconds तक respond ही नहीं कर रही है. People are seeing it. And in India, especially in after tier 2, most of the people are on 3G and a slow 4G. So वहां पे अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो आपका स्कोर ही वैसे लो हो जाएगा. एंड इट विल टेक टाइम. And in India now, if you don't have a Paytm wallet, if you don't have other wallets, because people are now more rely on the wallet, and the wallet penetration has increased a lot. So generally, placing an order वाला part आता है कि आपकी वेबसाइट की vitals कैसी हैं, web vitals. And second आते हैं आपके कि पेमेंट गेटवे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है. Paytm is the most widely used with around 50 to 50% market share in tier 2 and beyond in terms of wallet. And since the UPI is also in place, which again contributes around total market share of around 40 to 50% of payment gateway part. So इन दोनों को अगर आप ठीक कर लेते हैं, मैक्सिमम आपके जो नेगेटिव स्कोर्स आते हैं पेमेंट के पार्ट पे ही आते हैं. बिकॉज वॉलेट के स्टेप्स 2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं. कई बार वॉलेट में पैसे नहीं होते, या फिर वॉलेट से रिडायरेक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऐप टू ऐप माइग्रेशन होते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ गुड पेमेंट गेटवे. एंड वहां से यू विल रेजर पे इज गुड, पेयू इज गुड, यू कैन यूज दैट. There are new payments gateway as well, which are much cheaper, cash free, and there are others in place. We use Razorpay, PayU, and cash free, and we use dynamic engines to optimize the cost. कहीं पे cost कहीं पे कम है तो हम वहाँ पे optimize कर लेते हैं. Since we are at scale, we optimize the cost at payment gateway level as well. But I would recommend you guys to use only one payment gateway at this point of time. After delivery 50, यहाँ पे थोड़ा कम है because आपके in your hands it will not be end-to-end आप measure नहीं कर पाओगे. You might be using some platform to dispatch your order, maybe Shiprocket, maybe some other partners. We use Shiprocket, and we use maximum blue data delivery to dispatch the order. We need to make sure that your order is dispatched on time. So अगर यहाँ पे भी मैं आपको quick hack दे देता हूँ. Delivery maximum होता है कि after dispatching your order, कोरियर इतना जजमेंट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ कि उसको कैसे आगे डिलीवर करना है. जनरली ईच एंड एवरी कंपनी हैज द सेम डिलीवरी टाइम आफ्टर द ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड और फर्स्ट कनेक्टेड. फर्स्ट कनेक्शन से पहले ही डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी व्हाट सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम दे आर गेटिंग. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डिस्पैचिंग द ऑर्डर राइट ऑन टाइम विद इन 24 आवर्स at least for a tier 1 and tier 2 cities. एंड आपका कनेक्शन जल्दी हो रहा है बिकॉज पहले आपका कोरियर आपके वेयर हाउस में लेके जाता है नियर बाय, उसके बाद वो कनेक्ट करता है. जनरली वो कनेक्ट ही लेट करते हैं. सो वो कैसे हम क्रैक कर सकते हैं? इफ यू डायरेक्टली टॉक टू योर कनेक्शन गाय, यू विल एबल टू क्रैक दैट. सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर ये दो मैट्रिसेस क्लियर होती हैं. Currently what I have seen for the new age brands, and especially when you are a personal care, when you are in the food tech, you need to make sure these metrics on track. Fashion में फिर भी delay चल जाता है because Myntra and Nykaa fashion still are not able to pull that much delivery timeline because वहाँ SKUs ज़्यादा होते हैं, सब कुछ होते हैं, but बाकी जो industries में आप pull कर सकते हैं. So वहाँ पे make sure करोगे तो your delivery time reduce by 50%. टीयर 1 में आप नेक्स्ट डे टू मतलब टीयर 1 मेट्रोपॉलिटन में आप 1 डे to 2 डे डिलीवरी कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं होता. टीयर 2 में आप 3 to 4 डेज में डिलीवरी कर सकते हो. रेस्ट बियॉन्ड दैट आई थिंक एक्सपेक्टेशंस भी लो होती हैं तो वहां पे थोड़ा डिलीवरी टाइम भी लगता है, तो कोई इश्यूज नहीं है. एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स कि आरटीओ कितना ज्यादा होता है. देयर आर अदर थिंग्स व्हिच विल नॉट कवर इन दिस, बट यू कैन यूज ग्रोथ एक्स टू रिड्यूस द आरटीओ एज वेल. सिमिलरली आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. यहाँ पे सबसे ज्यादा जज किया जाएगा आपको. अगर ये ठीक नहीं है तो ब्रांड पे कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है. एंड दिस विल कवर योर पैकेजिंग एज वेल, योर हाउ द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड. पैकेजिंग नॉट इन जस्ट ऑफ कि वो मोनो कार्टन क्या है, आप किस में रैप करके आपने भेजा है. अगर जनरली क्या होता है, स्टार्टअप्स पैकेजिंग मटेरियल अच्छा यूज नहीं करते इन टर्म्स ऑफ जो जिससे वो बबल रैप करा हुआ है, या फिर तो जनरली क्या होता है वो स्क्वीज हो जाता है. स्क्वीज जाता है तो अंदर का मोनोकार्टन में डैमेज होता है, प्रोडक्ट आपको ओल्ड लगता है. जैसे कस्टमर को ओल्ड लगता है, कस्टमर इज अ किंग एंड वो रिजेक्ट कर देता है एंड वो बोलता है कि मुझे को तो न्यू प्रोडक्ट चाहिए. आपका आरटीओ भी इंक्रीज होता है एंड you're losing the customer as well. He might be a brand loyal but will buy from your Amazon or Flipkart etc. अगर वो brand loyal है तो this you need to make sure. and packaging cost ज्यादा नहीं आती, hardly 1 rupee per order पड़ेगा आपको, so you can improve that as well. Secondly, your mono carton or if you're using some other packaging material, वो थोड़ा सा better quality की होनी चाहिए and it should not get damaged when you are dispatching it to a tier 3 cities.
Second thing, don't try to sell older products. जनरली क्या होता है, स्टार्टअप्स जो लो हाफ शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिस्पैच कर देते हैं फ्रॉम द D2C वेबसाइट्स. ई कॉम और जनरली अदर वेबसाइट्स एक्सेप्ट नहीं करते प्रोडक्ट्स. आई नो कि इट्स यू हैव इनकर द कॉस्ट टू देम, बट वो नहीं करना चाहिए बिकॉज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है. What you can do, you can liquidate it at a particular discount, so the customer should also know, यार मुझे discount पे मिला था, I should expect कि lower shelf life होगी. So those all things you can do, but don't use a lower shelf life product and selling them at an MRP or at a very lower discount similar to other categories, right? And lastly, again the Google and Facebook rating. Facebook काफी लोग चेक करते हैं, Google काफी लोग चेक करते हैं. एंड आजकल गूगल का एसईओ इतना प्रोफिशिएंट है कि सर्च योर ब्रांड रिव्यूज, साइड में आपके वेबसाइट से रेटिंग फैच करके दिखा देगा कि क्या रेटिंग है, एंड फ्यू अदर रिव्यूज एज वेल. सेम गोस फॉर ई कॉमर्स, Amazon की रेटिंग एंड एक्सेट्रा. Amazon की रेटिंग जनरली हाई होती है, गूगल फेसबुक थोड़ा और जेन्युइन होता है. सोशल सेंटिमेंट्स, कितने नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव्स आ रहे हैं, इन सब के टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में. एंड यू कैन ऑल्सो, आई थिंक एट इनिशियल लेवल इतने आते नहीं है तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं. And other platforms, if you are grown a lot, then Reddit or maybe आपका TG अलग है, तो newer age audience जो Gen Z है या फिर और below that, they generally use Reddit a lot and other platforms. तो वहाँ पे भी हमें चेक करना चाहिए कि क्या sentiments चल रहे हैं. But people use social media a lot to buy a product. That's why the social commerce is growing a lot. So these are the few of the benchmarks जो I think one should consider, and one should make sure कि ये हम measure कर रहे हैं and ये implement कर रहे हैं. If everything is placed, then you should focus on your repeat customer part. If any of these are not in place, you should place some product path or maybe growth path in place, and then you should implement, okay, these are the things I will try to focus first, and then focus on it. Because अगर यहाँ पे dissatisfaction आ जाएगा, your cohort which you will able to target, which are satisfied with you, will be very very less. बिकॉज अगर इतना कम एनपीएस है आपका, तो आपका सेटिस्फेक्शन स्कोर बहुत ही कम लोगों में जो रिपीट होने के केपेबल होंगे, तो आपका टारगेट ऑडियंस ही कम हो जाएगा फॉर रिपीट. एंड अगर आप एफर्ट भी डालते हो तो आपको वैल्यू एड बहुत कम मिलेगा, एंड यू विल एंड अप सेइंग दैट रिपीट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर माय ब्रांड, राइट? एंड दैट्स फॉर द होल. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आई जॉइंड Mamaearth 3 years back, the scores we were hardly measuring any of these parameters. उसके बाद हमने शुरू करा. पहली चीज हमें पता लगी थी, पहले गूगल बहुत, फेसबुक बहुत डिटेल रेटिंग देता था, ऑर्डर पे भी देता था, डिलीवरी पे भी देता था. एंड वी देन लर्न अ लॉट, ओके दीज आर द थिंग्स वी नीड टू मेजर अपॉन एंड गो एड विद. ओके, लेट मी टेक द क्वेश्चंस एज वेल. Yes, so couple of questions in place. What is a good lifetime retention rate for apparel? I will cover in the future slides. How to manage delivery experience, already covered that. If you still have a doubt, let me know. What is the best time to ask customers to fill NPS code? Need to be each and every time, already shared. Should we ask for referrals only after sending NPS questionnaires? So उसको मैं बाद में cover करूँगा. So I think some of you might have read a book called Power of Moments. तो जब भी कस्टमर से कुछ भी फेवर मांगना होता है, एक वाव मोमेंट डिफाइन करना चाहिए, राइट? तो एक वाव मोमेंट हम भी, अगर आप Mamaearth में कभी परचेज करोगे तो हम पहले वाव मोमेंट लाने का प्रेफर करते हैं. वाव मोमेंट करना है. वाव मोमेंट इज समथिंग लाइक कस्टमर आपसे कब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है आपसे पहला ऑर्डर प्लेस करने के टाइम में. तो उसी टाइम पे यू शुड एबल टू आस्क फॉर अ रेफरल. जैसे आप ऑर्डर प्लेस करता है, डिलीवरी होती है, आपको लगा एनपीएस आई, तब आप ट्रिगर कर दो. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, व्हेन आई हैव रिकमेंडेड कि आस्क फॉर एन एनपीएस, these are introducing the wow moments. As soon as you see customer is satisfied, just make sure you ask for a favor, ask for a review, ask for a referral, ask for a maybe something else. So the power of movement book is very nice. Just read the book as well. You will see a lot of examples. But at that point of time, you should ask for any of the favor. Maybe buying a loyalty program as well. तो वो भी हम कर सकते हैं. So at that point of you should ask. अगर वो पॉजिटिव नहीं है, work and we as a Mamaearth make sure that जो detractors है मेरे, उनको हम छोड़ते नहीं है. वी मेक श्योर दैट, मेरी एक टीम का टारगेट है कि ये डिट्रैक्टर्स मेरे न्यूट्रल हों पहले, मे बी इन अ क्वार्टर और सो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ थिंग फीडबैक इज, एंड देन मूविंग न्यूट्रल टू द पॉजिटिव्स.
uh, the promoters, and that's how the whole system is built. Okay, and how to get NPS? How to get NPS emails? So frankly speaking, email in India is not very widely used. And जितना हम spam करते हैं इंडिया में, rights laws भी नहीं है, rights भी नहीं है. Each and every person can shoot the email. So email की open rate in India में it decreasing a lot, and it will decrease. Some of you might be using Klaviyo, etc. But eventually, when you are scaled, the email will not be a right medium. सो फर्स्ट है कि जैसे ऑर्डर प्लेस हो रहा है, थैंक यू स्क्रीन पे दिखा दो जब ऑर्डर ट्रैक कर रहा है. सो यूज योर कस्टमर इंटरेक्शन पॉइंट्स एज मच एज पॉसिबल. अगर मे बी थैंक यू स्क्रीन हो गया, मे बी जब ऑर्डर ट्रैक कर रहा है तभी आप नीचे पूछ लो. शिप रॉकेट क्वाइट गुड, जब भी ऑर्डर ट्रैक पेज पे जाते हो नीचे पूछ लेता है एनपीएस, राइट. यू कैन ऑल्सो यूज व्हाट्सएप, राइट, बिकॉज व्हाट्सएप की ओपन रेट और रीडेबिलिटी रेट 90% नंबर होती है. इट विल डिक्रीज in future because people are sort of misusing WhatsApp as of now. बट जब तक वो यूज हो रहा है एटलीस्ट वो 2 से 3 साल तो यूज हो गई, उसके बाद आई थिंक वो ड्रॉप, द थिंग्स विल ड्रॉप, बट आई थिंक दे विल इम्प्रूव द प्रोडक्ट. So I would not recommend email too widely or rely only on the email. Email is one of the tools if you're getting a good open rate, well and good. But generally email पे NPS देना मुश्किल होता है. You need to understand that कि ईमेल पे आप क्लिक करते हो लिंक पे तो एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा. अब आपको फेवर करने के लिए वो इतना एफर्ट कभी नहीं लेगा कस्टमर, राइट. तो दैट्स व्हाई एंड मे भी हो सकता है कि आप उसमें डीप लिंक इंट्रोड्यूस कर दो. जैसे वो क्लिक करता है यस पे या फिर रेट पे, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस सिस्टम में, और वो टेक्स से भी ज्यादा होता है. क्लेवियो में शायद यूज हो जाएगा, बाकी जगह थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट देयर आर टूल्स अवेलेबल मार्केट में जो एंड प्लगइन्स अवेलेबल जो आई थिंक वो काफी इजीली यूज कर लेते हैं. जहाँ इनिशियली मामाअर्थ में वो कॉमर्स यूज करते थे, हमने शॉपिफाई भी नहीं किया था, हम उस पर और भी कॉस्ट कटिंग कर रहे थे. नाउ वी आर ऑन अ कस्टम वेबसाइट, तो हम अपने मतलब वी आर यूजिंग द टूल्स प्लग एंड प्ले वाले, जहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट. Now we come on to the engagement phase, and feel free to post the questions. I will answer them, and I think I've answered most of them, right? Right. Coming to the next part, customer education and bonding, जिसको हम engagement phase भी बोलते हैं. In this section and the section beyond it, I will cover examples more because ये बहुत open-ended sections हैं, बहुत depend करेगा brands के लिए, बहुत depend करेगा कि fashion industry में हम क्या करते हैं, depend करेगा कि food tech में क्या करते हैं, maybe subscription based जो startups होते हैं उनमें हम क्या करते हैं. So it will be more related to what are the use cases one can use and what are the top level techniques. If you want to go deep, we can also go, but these are the high level techniques one should use. So first take example ki you need to research on your browsing behavior. You should know who your customer base is. So when you define your acquisition base, you first आप divide करते हो कि आपका TG क्या है, व्हाट्स योर कस्टमर लुक्स लाइक. सो सिमिलर आपकी वेबसाइट पे भी है कि एक्चुअली कस्टमर कर क्या रहा है, कहाँ पे जाता है, क्या भी ब्राउज करता है, कितनी देर वो स्पेंड करता है आपके प्रोडक्ट पेज पे. जैसे आप Amazon पे जाते हैं बाय करने या नायका पे जाते हैं बाय करने, यू जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट पेज. जनरली नायका का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है Amazon से. Amazon इज अ मोस्ट ऑफ सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म, नायका इज मोर ऑफ अ विजिबिलिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म. सो सॉरी इंटरप्ट यू, आई थिंक आपका जो स्क्रीन है ना वो स्लाइड शो व्यू में है, सो इट्स आई थिंक PPT view में will probably be, yeah, perfect, yeah, awesome, perfect, yeah, cool. Is yeah. So right, so you can do sorry, let me start again. So you need to make sure that how you define your acquisition audience. You also need to define customer, what they are doing on the website, and what sort of customer sets are doing different activities on your website. जैसे you can use GA user behavior flows where the customers are coming from, where what they are using, वो search use कर रहे हैं. जैसे हमारी वेबसाइट पे सारा search use होता है. This some of the people might be going on products, and these are the actual data, and it's a old data है. So some of the people are going on the offer page, etc. So we know that customer कहाँ से आ रहा है, कहाँ से drop हो रहा है, and वो कितना time spend हो गया. तो उसमें आप और भी cuts use कर सकते हैं. There is a segmentation technique on the Google Analytics, and that's how the whole system is being used. Secondly, we are also using some other tools, and which is quite not very expensive, like Hotjar. So वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कि आपका कस्टमर का ब्राउजिंग बिहेवियर क्या है. हीट मैप्स आप देख सकते हैं कस्टमर सबसे ज्यादा क्लिक कहाँ कर रहे हैं. जैसे वी रिसेंटली लॉन्च्ड अ कलर केयर कैटेगरी, सो यू कैन सी कलर केयर पे बहुत ज्यादा क्लिक है. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि मोबाइल भी मैक्सिमम होता है सबका यूज. तो यहाँ पे लोग कार्ट पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं. तो लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, किस सेक्शंस में जा रहे हैं,
what people are doing on the website, you should know. Based on this, there are two action items you can introduce. First, how to improve your website, how to improve your content, customer kahan pe drop ho raha hai and everything. जिससे आप engagement better. And few of the things you might not able to maybe correct on your website, maybe limitation of tech, maybe, or your brand is stand in those fronts. Then what you can do is you can improve that via communication. So you can plan the communication the similar way. Maybe you know that या customer ने एक product description page पे गया, browse the things, but उसने आगे कुछ नहीं देखा. Maybe उसको benefit में समझ नहीं आ रहा. You can introduce the hypothesis and then test. But you need to make sure you are tracking कि customer आपके उस पे behaviors पे क्या क्या कर रहे हैं. And based on that, the action item will be defined. So know your customer type है पूरा ये. And इसको each and every page need to be tracked. We do this on a regular basis, and this has been done from day one. When we were small, and frankly speaking, bugs हमें इसे पता लगते थे कि customer website कहाँ पे issues आ रहे हैं, कहाँ पे customer engage नहीं कर पा रहा है. Because at this level, customer will not call you or comment you on social media कि आपकी website में issues है, या फिर there is some issue on the while placing an order. They will just withdraw कि यार new startup था और new brand थी तो मेरे को तो पसंद आया नहीं because their website is not working. So those how the things are defined. Second, if you go ahead, you can, based on those observation, you can also define कि आप क्या A/B test कर सकते हैं. Suppose and you can use Google Optimizer as a tool. If you are quite big, you can use VMO. It's quite a good quality tool. And बिना tech के सारी चीज implement कर सकते हैं. Google Optimize is free and it's a cloud snippet which need to be implemented and Shopify में easily हो जाता है ये. So आप वहाँ पे A/B test कर सकते हो. If you think that your first image, maximum people, 80% of the people just only see images on a product description page while placing an order. तो आप कौन सी इमेज पहले होनी चाहिए उस पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं. इफ यू सी Amazon फ्रॉम अ डिफरेंट ब्राउजर, यू विल एबल टू सी दैट ईच कैटेगरी में Amazon बहुत ज्यादा टेस्टिंग करता है इस चीज पे कि कौन सी कैटेगरी पे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिकने की एफिनिटी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस वी आर शोइंग. तो वहां पे हम टेस्ट कर सकते हैं स्मॉल टेस्ट बेस्ड ऑन द based on the results which we have or the research which we have done from the website. So यहाँ पे आई थिंक बहुत ही बेसिक माइन्यूट लेंस से देखना चाहिए कस्टमर कर रहे हैं. आइडियली जैसे मेरा एक्शन यहाँ पे होना चाहिए था, कलर के सबसे ज्यादा सर्च है इस पर्टिकुलर एरिया में जो न्यू लॉन्च है, इसको मैं पहले इंप्लीमेंट कर दूं. बिकॉज कस्टमर कैसे ब्राउज करता है, कस्टमर पहले लेफ्ट टू राइट जाता है एंड देन टॉप टू बॉटम आता है. सो होल द स्क्रीन नीड टू बी कवर्ड. उसको पहला एक्शन कलर के चाहिए था तो कलर के मुझे दे देना चाहिए था. सो दोस हाउ द एक्शन नीड टू बी बिल्ड. ओके, एंड बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है. मतलब किसी को ऐसे कुछ प्रोफिशिएंट नहीं होना चाहिए. एंड द मोस्ट लॉजिकल पर्सन इन each and every companies are in the product team or the conversion rate CRO team generally होती है वो. Now going further कि now after seeing that कि मैंने काफी एक्टिविटी करी वेबसाइट पे, आई यूज दिस टेस्ट एज वेल, बट फिर भी आई एम नॉट एबल टू एंगेज माय कस्टमर्स. तो सेकंड ऑप्शन इज कि पहले तो हम इनएक्टिव कस्टमर्स को देख लेते हैं, बिकॉज जनरली स्पीकिंग वेबसाइट की कन्वर्जन रेट मैक्सिमम 5% से जाती है एंड इट माइट गो टू 10% डिपेंडिंग ऑन स्टार्टअप टू ब्रांड, बट इससे ज्यादा जाना थोड़ा मुश्किल होता है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिफाइन द इनएक्टिव कस्टमर बेस एंड डिसाइड टारगेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर दैट. बिकॉज मुझे पता है कि यार एक बार तो मुझे इनको ब्रांड इंट्रोड्यूस कर चुके हैं and the brand introduction has been done, or maybe they have already purchased a product but दोबारा नहीं purchase कर रहे हैं. So we can define some segment, install the app or website but visited 7 days ago, but उसके बाद कुछ भी नहीं करा इसने. Add to cart कर लिया but drop हो गया, पेमेंट फेल हो गया. पेमेंट फेल हो तो बहुत learning load होता है, conversion rate बहुत high होती है. So इनको हम कर सकते हैं. We can decide कि the cheap सबसे मेरा कॉस्ट है और पर्सनलाइज कौन सा ईमेल पोशन व्हाट्सएप वहां पे सेंड करते हैं. वहां से कम नहीं हो तो व्हाट्सएप, देन मे बी आई कैन यूज एन एफिलिएट बिकॉज वो और चीपर है. देन गूगल एंड देन फेसबुक, बिकॉज फेसबुक इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. तो इसके बेसिस पे हम ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज डिफाइन कर सकते हैं. एंड यू कैन डिफाइन किया किसको क्या कम्युनिकेशन सेंड करना है, किसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट, और पर्सनलाइज कर सकते हैं हमारे. सो सपोज एज एन आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर यू कैन टेक द बर्थ डेट कि हे आई वी रियली लव टू नो यू मोर. Just for the special occasions, we want to make sure that we will make your day more special. Could you please share your birthday? जैसे हेड्स ऑफ और टेल्स करता है, आपके पेट की डिटेल ले लेता है. आपके पेट का नाम क्या है, आपका पेट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड बर्थडे मंथ में वो काफी अच्छे ऑफर्स भी देता है आपको और पर्सनलाइज देता है. एंड आप पेट आपके लिए जनरली आप एज अ पेट पेरेंट ही होते हो. आई हैव अ पेट एज वेल. सो जब मेरे को मैसेज आता है कि फॉर माय
डॉग आई नीड टू बाय समथिंग, और वो पर्सनलाइज करके देता है, माय डॉग्स नेम इज बेंजी, सो बेंजी के लिए गिफ्ट लेना है, सो यार ले ही लेते हैं अब तो, और वो इतना प्यार से वो देखता है हमें, तो दोज पर्सनलाइजेशन यू कैन डू। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड ज्यादा पर्सनलाइजेशन आते हैं। जनरली एनिवर्सरी बहुत अच्छे वर्क करते हैं, बर्थडे बहुत अच्छे वर्क करते हैं, यू जनरली बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। जनरली जो आपके फीमेल क्लाइंट्स होते हैं वो आपके बर्थडे मंथ पे या फिर किसी ओकेजन मंथ में काफी बाय करते हैं, एंड दिस डेटा हैज बीन लेवरेज्ड बाय अदर स्टार्टअप्स, सफोरा हो गया, नाइका हो गया, काफी यूज करते हैं इसको। एंड दैट्स हाउ द होल। एंड बर्थडे मंथ में जैसे फूड टेक स्टार्टअप है, स्विगी से आप काफी ऑर्डर करोगे, तो उसको पता है बर्थडे में पार्टी तो होने वाली है एक से दो, सो वहां पे दे डू एग्रेसिव, दे पर्सनलाइज योर कंटेंट accordingly. So this is one of the, again, a good amount of journey. Again उसको omni channel भी कर सकते हैं हम, you can distribute depending on आपके use case कितना important है। एंड सेकेंडली आपके ब्रांड ओकेजन बहुत, सो जनरली व्हाट वी हैव सीन, जब हम ब्रांड कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ और चीज सेलिब्रेट करते हैं, तो पीपल जनरली रिलेट अ लॉट, एंड वो काफी बाइंग होती है। हमारी एनिवर्सरी मंथ पे हाईएस्ट रेवेन्यू करते हैं हम पूरे साल का, एंड उसको बीट करने के लिए हमें अगली एनिवर्सरी ही करनी पड़ती है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। इतना इतना लोग रिलेट करते हैं उस एनिवर्सरी। ऑल्सो द ऑफर इज क्वाइट गुड, बट वो एनिवर्सरी से रिलेशन काफी, एंड ऑफर हम छोटा भी डालते हैं, पीपल एबल टू रिलेट मोर कि मामाअर्थ की एनिवर्सरी है, वी शुड बाय समथिंग। सो वो ब्रांड पूरे या फिर ब्रांड सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं, सो वहां पे हम कर सकते हैं। दे माइट बी सम अदर एक्टिविटी यू माइट बी डूइंग, एंड वो उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। मे बी यू आर टाइंग अप, जैसे वी रिसेंटली टाइम विद फेमिना फॉर अ मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन कॉन्टेस्ट, सो वहां पे जैसे एज अ जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, वैसे हम ह्यूमन को करना चाहते हैं कि वो कौन जो अच्छी डीड करते हैं, तो पीपल आर एबल टू रिलेट मोर। तो वहां पे काफी लोग आए, दे आर विजिटिंग द वेबसाइट, दे आर चेकिंग द होल कंटेंट, एंड साथ में एंड 10% ऑफ देम स्टार्टेड बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अस एज वेल। सो ये ब्रांड कोरिलेशंस भी काफी यूज होते हैं। Sometimes they are not able to buy, sometimes they don't buy after visiting the website or something, but at least वो ब्रांड में जो माइंडसेट है, जो पॉजिटिविटी बिल्डअप है, वो आप फ्यूचर में लेवरेज कर पाओगे, द वर्ड ऑफ माउथ विल इंक्रीज अ लॉट। So those are the engagement matrices will work. Some of the matrices are कि order tracking पे भी हम काफी कुछ कर सकते हैं, because second है कि उसको interact करते रहें, they should be used कि मामा का कुछ message आया तो they should use that, don't over bombard first and foremost. Feedback journeys introduce करो and make sure that you improve and implement the feedback, especially like grocery startups हैं, country delight है, when they take the feedback they make sure कि आपको respond back करते हैं, apologies for the inconvenience caused, we will make sure we will resolve this in 24 hours, आपको कॉल करेंगे, समझाएंगे, एंड मेक श्योर करेंगे रिटेन रहे, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग है, जो भी डिट्रैक्टर्स थे उनको पहले न्यूट्रल करा उन्होंने सॉल्व करके, एंड देन उसको पॉजिटिव क्रिएट करा, तो उसके बाद उसको ऑफर भी दे देंगे कि मेक श्योर कि अगर वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है तो वो आगे वो बेटर भी कम्युनिकेट हो जाए। सरप्राइज गिफ्ट वाला जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होता है, नाइका एंड पर्पल हैज यूज्ड दैट क्वाइट लॉट। आप जनरली लास्ट ईयर काफी होता था, you used to get a surprise gift with each and every order of Nika, and people tend to place a lot more orders just to get the surprise gifts. Now they have built a funnel as well. They started asking for freebies from the brands which they get in the free of cost, and वो साथ में dispatch करने लग गए। इससे brands का भी profit होने लगा, customer का भी profit हो गया, and both ends brand is also starting money because एक sampling की cost भी ले लेते हैं। So surprise gifts also one of the ways which you can introduce. So engage करना है, it will depend highly on your कि brands कैसे behave कर रही हैं। ऑर्डर ट्रैक पे भी आप कर सकते हो कि आप हाउ टू यूज वाला वीडियो बहुत अच्छा वर्क करता है, तो कस्टमर हैज बॉट, डिलीवर हो गया, उसको समझाओ कि कैसे यूज करना है प्रोडक्ट। फॉर अ ब्रांड लाइक अस, जो हमारी हमारी सेकंड ब्रांड है डर्माको, व्हिच इज मोर ऑन टू द lines of clinical actives to solve any particular problem, we call the customers initially कि यार आपको ऐसे यूज करना चाहिए, जो मे बी सैलिसिलिक एसिड है, इट शुड नॉट बी यूज लाइक कि हाथ में ऐसे करके मसाज करके क्रीम लगा ले, इट शुड बी यूज ऑन अ पर्टिकुलर स्पॉट्स, अगर बाकी जगह यूज करते हो तो इरिटेशन हो सकती है, इट शुड बी यूज ओनली ऑन द एक्ने। सो वो चीज हम नाउ वी आर एट अ क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ स्केल, वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग फॉर द अदर मीडियम्स लाइक व्हाट्सएप एटसेट्रा, एंड वी मेक श्योर उसको हम बेटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज जनरली हमने क्या देखा है कि when you are not communicating the customers, they tend to use the product in a wrong way, and finally outcome नहीं आएगा, they will be detractor for your brand. So just make sure that you are making sure कि जहाँ पे भी आपका वो point है उसको हम better utilize कर रहे हैं। Secondly, maybe if they have bought some product, अब इंडिया में अवेयरनेस नहीं कि सनस्क्रीन कब यूज करनी चाहिए। सनस्क्रीन नाम सन आता है, बट वो विंटर्स में भी यूज करनी चाहिए, बिकॉज वो इट सन्स नॉट जस्ट ओनली प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन रेज और समथिंग एल्स, बट यूएए एंड यूएबीबी से ही प्रोटेक्ट करता है, एंड सन विंटर में वो काफी इम्पैक्ट करता है बिकॉज आप मैक्सिमम सन में जाते हो।
So Indian market में sunscreen maximum बिकती है on the summer front and not in the winter front. So उसको हम कैसे better, the education is really important. We know that our product works best with the sunscreen, and because उससे आपकी, क्योंकि आप how the clinical actives work, वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, उसके बाद वर्क करना शुरू करते हैं. जैसे एक्सफोलिएट होती है, अगर सन आ गया तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, and you can get a worse effect, maybe something else. So that's how the whole education need to be done, that's how the engagement need to be done, and this will let, because आपने उसको एक engage करके you finally give the outcome to that customer. So this is these are the important stages. You need to first analyze the customer, talk to a lot of customers before designing the journeys. So our team is divided in two parts: acquisition team and the retention team. Both team has a quite a good amount of insight that after talking to a customer, they talk to our customers at this point of time as well, and then they design ki customers ko problem kahan rahi hai, and then they make sure. So we come up with the idea that similar to maybe जो healthify me app है कि drink water after each and every hour, हम भी कस्टमर से ऐसी कुछ बात करते हैं कि लेट्स मेक श्योर कि आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर ईच एंड एवरी मॉर्निंग कि यू शुड वॉश योर फेस एंड देन अप्लाई बाय दिस मेथड. मे बी वो रिस्पॉन्ड करेगा, मे बी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट वी जस्ट मेक श्योर दैट कि हम उसको इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, एंड देन वी क्रिएट अ जर्नी. उससे क्या होता है कि नेगेटिव डिट्रैक्टर्स हमारे कम हो जाते हैं. कस्टमर्स को ये जरूर लगता है कि यार मैंने ढंग से यूज नहीं करा, आई नो हाउ टू यूज इट बट आई हैवंट यूज्ड इट. एंड इंडिया में वो एजुकेशन काफी कम है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एक्ने का मार्केट काफी ज्यादा एक्टिव है मेल में भी, एंड मेल डोंट नो, मच ऑफ द मेल्स डोंट नो दैट हाउ टू यूज दे फेस वॉश भी. जो ऐसे ऐसे यूज करा जाता है वो इट्स अ रॉन्ग वे, वो आपका ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकता है. ईच एंड एवरी फेस वॉश वी नीड टू बी यूज इन अ पर्टिकुलर वे, so especially the clinical active ones. So ये education we try to provide to the customer and make sure that उससे वो increase करते हैं, and that's how the whole system need to be built. Okay, so engagement part बहुत important होता है. People generally skip the engagement part, but these are the points. If you're able to make a connect with the customer at the engagement stage, after placing an order, before placing an order, customer will listen to you. And this is the point जहाँ पे आप एक relationship build करते हैं, and using the relationship you will convert them in the later stages, which we will cover into the next slides. Now to just cover success KPI क्या हो सकती हैं. So depending on what sort of strategies you're using, the conversion of the website will increase if your engagement strategies are good. If you're using the app or maybe on the website as well, you can create डेली एक्टिव यूजर कितने हैं मेरे, मंथली एक्टिव यूजर कितने हैं, वीकली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, कितने लोग बार बार आ रहे हैं कंटेंट देखने के लिए या फिर चीजें देखने के लिए, सेशन ड्यूरेशंस कितने इंक्रीज हुए कि नहीं एक्टिविटीज के बाद, पेजेस पर सेशंस कितने हैं, न्यू विजिटर्स कितने, रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं. So these all things you can measure. This most of the things can you measure directly from a Google Analytics platform. So it's quite easy, but one should cover that. Let me take the questions. Let me take the questions as well. How can you increase the slide size? Okay, I have increased that. Apologies for the apologies earlier. Can you show the pyramid again, please? Okay. What is the ideal frequency of visual once a week? Okay. Let me cover that. Let me just go to the pyramid again. Right. So this is the pyramid. It's not applicable for each and everyone. It depends on the what sort of market you are at. Email, SMS, push, because it's a cheaper medium. What we have defined is we want to optimize the cost. हर किसी को हम Facebook, Google से target नहीं करना चाहते. So email, SMS is the cheapest medium. First of all, email and push are the cheap. Push notification are cheaper medium. SMS फिर भी India में तो prominently use होता है, तो we started using that. WhatsApp is the much that 5 times higher than the email cost, the SMS cost. Then the affiliate program, we can use to quite a good amount of affiliate, because India में जो आप I think हम जो TG target करते हैं is more of a price sensitive customers. वो affiliate website पे काफी available होते हैं. They search for offers available etc. So वहाँ से अगर हम ला सकते हैं तो Google as a platform, Google में there are different type of ads, maybe search ads, shopping ads. You can use search and shopping is the one of the cheapest amount of medium, and go higher to the discovery and the other platforms. And Facebook remarketing ads, which you can use. So this type of pyramid you can use, and it is you can further divide into a type of campaigns from each platform, but it is not the, you don't need to stick to that कि यही use करना है. It you need to try and test, and depending on what sort of brand methodology or brand mediums you have, तो आप उसके accordingly use करेंगे. Secondly, don't and for few of the brands, Google and Facebook के restrictions ज़्यादा होते हैं, so you need to find alternate platforms as well.
Okay, idle frequency for email. So it depends on cohort to cohort. If you are sending communication or maybe to order track, engaging with the customer, how to use, you can send a good amount of emails, maybe once a day as well. But if you're sending communication just for offers and etc., don't send it on a regular basis. So email का spam rate आपका increase हो जाएगा. Spam rate increase होगा कि domain blacklist हो जाएगी और आपको हमेशा या तो promotion या spam में जाएंगे. So inboxing rate आपकी low हो जाती है. So email को इतना until if you see for a particular journey your open rate is going down, you should reduce the frequency or improve the communication of that journey. You should have multiple domains as well so that वहां से आप send कर सकते हैं. Your domain is not blacklisted by the ISPs. Which tools are recommended to use for managing omni-channel customer journey, especially when you are using Shopify? So ये बहुत simple होता है यार, आपका जो pixel है. So omni-channel journeys maintain करने के लिए there are advanced tools available. We use MoEngage, we use some other tools as well. But generally simple है. If you define कि for a particular journey, let's take an example कि customer at abandon cart हो गया, कि add to cart करा but drop हो गया. On day one we decide कि email is push से करा. You generally send a signal to each and every platform कि कौन convert हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है. By using pixel etc. You just started creating an audience कि बस audience create करते हैं. पहला बनाते हैं कि day 1 to day 3 हम यहाँ से tackle करेंगे. Maybe day 2 to day 4 हम बाद में tackle करेंगे from WhatsApp से. So आप communication journeys बनाना शुरू कर दो कि any platforms, कोई tool भी का use नहीं है, जो plugin available है इन platforms से वो you can use जो भी आपको suit कर रहा है. If you want to use a one-stop solution for all, we use MoEngage, but I would not recommend MoEngage at your stage because it's quite a good amount of tech expertise needed to set up that tool only. तो वो नहीं करेंगे, but each and it is very fairly simple. Your digital marketer will know कि कैसे journey run करनी है. You just need to define कि किस point पे किसको reach out करना है. Just that. कोई भी इसमें rocket science नहीं है जिसको I think वन टूल चाहिए जिसको रन करने के लिए. वो आई थिंक फैंसी चीजें मार्केट में जो आती रन होती हैं, बट इफ यू थिंक फ्रॉम अ फर्स्ट प्रिंसिपल इट्स वेरी इजी. ओके, how can I nurture purchase customer on market, for example, using FBA and we don't get customer details, right? So I think that's the right question. वो generally आप कर नहीं कर पाते customer का. So there are two things which you can use. First is as the order is delivered, you can send communication via an email to the customer on how to use, next steps, etc. So उसको बहुत rich बना के रखो. And what we generally do is we make sure वहाँ पे उसको हम upsell भी कर देते हैं recommended product से. And for each and every product we sell ki okay, you have bought this product, thank you for buying this product etc. This is the how to use process. This is so email Amazon will support you to sending these communications if we have purchased purchase a particular product from the website. For other platforms itna abhi bhi robust cheez available nahi hai, so you can ask maybe those platforms, but Amazon pe available hai. Okay, and then you can also use their DSP platform to remarket those customers. Okay, and maybe running a display ads or maybe outside the platform you can run, but those are a bit expensive, and it's more about nurturing the lead. And if you are sure that you are targeting the correct TG and you want to nurture that, ways are available, but you need to make sure that you are targeting at the right point of time because थोड़ा costly ज़्यादा होता है Amazon का DSP. What is the best way to capture customers birthday after placing an order? उसको relate करना है कि the wow moment वाला term define करके after placing an order is the right moment to ask as many details as possible, not before placing an order. Okay, let's go to the next slides. Right now, coming to the customer commitment part, the how to make sure we place a second order. So it's more of a this section is more divided on कि order कैसे place कराना है जब engaged हो गया customer. Okay, second order है जो हम term use करते हैं maximum कि second order place कर लिया तो मेरा loyal customer बन जाएगा. I know that. Okay, so that's why we have defined the terms internally. Okay, let's move ahead. So first is the reduce the abandoned cart. I've already covered that, but this is a sample journey which you can run. You can see that okay, where the customers are dropping. You can divide based on the various segmentation. New है, repeat है, किस category का cart में डाला है, कोई offer लगाया नहीं लगाया है. And based on that, was completed order, add to cart कर देते हैं. Then again a customer trigger कर देते हैं journey. And I'm not sure about a Shopify tool. I will research and let you know. But these are the basic journeys जो वैसे WooCommerce में हमारे पास available थी, एक plugin था. I forgot the name. WooEngage something था.
सो वहाँ पे हम यूज कर लेते थे इसे, और बहुत ही सिंपल था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी कम्युनिकेशन चले जाते तो वहाँ से कम्युनिकेशन आ जाता है, एंड दैट इज ट्रिगर्ड बाय ईमेल एंड एसएमएस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट द पुश नोटिफिकेशन. सो दिस टाइप ऑफ जर्नीज वी स्टार्टेड बिल्डिंग. And what I have seen in a young phase, people don't leverage email, SMS, push notification, and WhatsApp. Not only for the returning customer or the customer who has purchased, but also जो website पे abandon हो रहे हैं. And because if you're reaching out again to a page from a paid channel, the cost is really high. For reaching out to, for one click, you might be paying varying from 2 to 20 rupees, 50 rupees, depending on type of audience you are targeting for. But email की cost कितनी है? Email push की cost कितनी है? You can send good amount of email push notifications to them. So from day one, because push notifications takes time, because you take a consent from the customers as well. So started implementing those tools on a website, take the consent and then go ahead. And that's how the whole system need to be built. So the omni-channel hierarchy model you should build internally by testing various frameworks, better dating communication, and then you should try implementing, try implement. But email, SMS, and push are the things we should implement from the day one only. Maybe you started using after 1 month or so, but day one से बना implement कर देना चाहिए, so that you started getting the consent from the customer to send the email, SMS, push notification, etc. Similarly, when we were at initial stage, out of stock बहुत ज्यादा होता था. Customer जो सबसे ज्यादा बिकता था वही out of stock हो जाता था, तो उस पे ad run हो रहे होते थे. So what we started doing was कि we started giving me notify me journey हमने बनाई है. So we started just share your email or SMS. We will drop you an SMS or email as soon as the product is back in stock. And उसका भी एक plugin था, notify me plugin type था. I will again share the name of the plugin. So इसका हमने काफी यूजफुल था, बिकॉज एट दैट पॉइंट बहुत कम प्रोडक्ट्स आते थे. एमएक्यू हमारा काफी लो था, 1000 प्रोडक्ट्स आते थे हमारे पास, एंड विद इन 2 days यूजिंग दिस जर्नी हम सारे प्रोडक्ट सेल कर देते थे. सो आपका इफेक्टिव कैक ओवर अ पीरियड ऑफ वीक और अ मंथ, बिकॉज जो कस्टमर आपने इसको एडवर्टाइज कर दिया था डे वन पे, he or she was interested but not able to convert because the product was out of stock, you can convert them at later stage of time. So this is the one of the good quality journey, and especially for a startup world जहाँ पे आप predict नहीं कर पाते डिमांड एंड सप्लाई क्या है, and you are not able to control your ads कि यार इस पे ही मुझे ad दिखाना है, because maybe your DBA ads, maybe some other communications उस पे work नहीं कर पाते. And especially for the startups, few of the main दो तीन प्रोडक्ट्स हैं वही आपको काफी फेम दिलाते हैं, एंड वही आउट ऑफ स्टॉक होते जाते हैं बार बार, एंड मे बी योर लीड टाइम विल बी हाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट एमएक्यूज एक्सेट्रा. सो दैट्स आल्सो अ चैलेंज. सो बैक एंड स्टॉक जर्नी इज क्वाइट अ गुड, अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिकॉज वी मेक श्योर दैट कि वी फोरकास्ट एक्यूरेसी इज देयर. And lastly, and the most important part is the discount letter. In India market, the price sensitivity is very, very high. And if you should make a discount letter internally that day one पे मुझे कितना दिखाना है, day two पे कितना दिखाना है. It should be communicated maybe via acquisition, maybe on a retention stage. Retention stage पे काफी easy होता है करना, because you can communicate via email, SMS, etc. Because मुझे पता है कि यार मेरा dormant customer है, अब नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, कि यार 10 रुपए और 10% और डिस्काउंट देता हूँ, that make sure I convert them. So those type of internal model you need to build as well, and you can communicate to the customer. You can do this for both acquisition and retention. This discount letter works at a good scale for both acquisition and retention. But you need to make sure that you differentiate your acquisition strategy with your retention strategy, because if you exposed your customer with the acquisition strategy, अगर same चीज आपको उसको retention में दिखा रहे हो, तो he will be saying that okay तो मुझे पहले मिल गया था, I will surpass that. You can currently I have communicated most on the lines of कि percentage में discount दे सकते हो, freebie में discount, तो perceived value of discount हमें increase करना है, हमें absolute discount कभी increase नहीं करना. Generally the marketers more believe on कि हम directly और discount करें तो increase जाएगा. नहीं, क्यों करना है? Perceived value increase करते हैं. If I can give a free product, it's good or not, मैं वो करता हूँ rather than giving a flat discount. If I can give more onto the lines of कि कैशबैक दे दिया मैंने उसे, या फिर कुछ और दे दिया मैंने, तो वो कैसे हो सकता है? मे बी आपके ब्रांड्स के लिए कुछ और भी चीज वर्क करती है, तो वो क्या हो सकती है? परसीव वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड ऑफ द डिस्काउंट रादर देन द एब्सोल्यूट डिस्काउंट. योर पीएनएल शुड नॉट हिट बाय द डिस्काउंट्स. दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. अगर वो हिट कर रहा है तो इवेंचुअली कस्टमर वैसे ही कन्वर्ट हो रहा है, वो आपको मे बी ईयर डाउन द लाइन यू विल रियलाइज कि डिस्काउंट बहुत ज्यादा, नाउ आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस दैट. Next is the cross sell. कि आप I know that if a customer has bought the shampoo
या उसका हाई चांसेस है कंडीशनर तो बाय करेगा। सेम ऑयल बाय करा तो यार बाल तो धोने ही है तो शैम्पू बाय करेगा। तो मेरे लिए अपसेल मैकेनिज्म बहुत ईजी हो जाता है। तो क्रॉस सेलिंग कैटेगरीज क्या है मेरी, क्या कोरिलेशन है, डेटा से भी निकाल सकते हो बट कॉमन सेंस से भी निकल जाते हैं चीजें, एंड डेटा से भी काफी ईजी होता है निकालना। यू कैन सी व्हाट इनिशियली जो हम बिल्ड करते थे, हम टॉप मतलब एसक्यू कॉम्बिनेशन देख लेते थे एक्सेल शीट पे, एंड उसके बेसिस पे हम बना लेते थे कि कौन कौन से हम जर्नीज बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिफिल जर्नी। रिफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अवर प्रोडक्ट इज यूज्ड रेगुलरली तो रिफिल तो हो ही गई। तो फेस वॉश शैम्पूज तो रेगुलरली यूज कैटेगरीज हैं, तो वहां पे तो आप रिफिल बना ही सकते हैं एंड बहुत इजीली यूज होता है। एंड अगर रिफिल से पहले हम कर सकते हैं, जो हम करते हैं जनरली, तो क्रॉस सेल कर देते हैं हम कैटेगरी। अगर फेस बाय करा है तो उसको हम हेयर सेल कर देते हैं, या फिर उसने सीरम बाय करा है तो हम बोलते हैं कि आप बॉडी की कैटेगरी आप ले सकते हो। एंड पीपल जनरली, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर इज मोस्ट सेटिस्फाइड। इनिशियल जब आपकी पहली टाइम ब्रांड परचेज करिए, वाओ मोमेंट उसका है, तो उस वाओ मोमेंट पे आप अपसेल करते हो तो बेटर है। तो सबसे ज्यादा हर ब्रांड का विद इन 7 days नेक्स्ट परचेज हो जाता है, एंड दैट परचेज साइकिल रिड्यूसेस आफ्टर अनटिल अनलेस आपने बहुत हाई अमाउंट ऑफ यूपी पे सेल नहीं कर दिया। अगर आपने 5-10 प्रोडक्ट सेल कर दिया हायर किट फिट पे, तब नहीं होगा, बट अदरवाइज फर्स्ट 7 days में सेकंड परचेज कर लेना चाहिए कस्टमर को। दैट्स व्हाई यू नीड टू रिड्यूस योर टैग टू डिलीवरी, बिकॉज सेकंड टाइम कम्युनिकेट ही कैसे करोगे आप उसे अगर आपने पहले प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं करा। तो आपको उस वाओ मोमेंट को बेटर लेवरेज करने के लिए आपको डिलीवरी टैग भी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है। Second is promote offer by affiliate partner. I've already covered that because ईमेल एसएमएस ब्रांड से आते हैं तो लोगों को लगता है कि जेन्युइन नहीं है तो बहुत ऑफर करते हैं। कहीं और से थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करती है, गूगल फेसबुक से या फिर एफिलिएट पार्टनर से, तो आपको थोड़ा बेटर लगता है, जेन्युइन लगता है कि हाँ कुछ बाकी सबके लिए भी चल रहा हो। पीपल डोंट परसीव कि आपके जो बाकी वेबसाइट्स पे ऐड आते हैं कि वो एक्चुअली ऐड है या फिर ऑर्गेनिक है। हाउ डू पीपल स्टिल थिंक दैट गूगल सर्च पे जो पहली पोस्ट आती है फिर वो ऐड होता है वो ऑर्गेनिक होता है या फिर वो जेन्युइन है। So that's how the CTRs are so high for the Google Ads. And I analyze the top and underperforming categories. जो हम what we can you can do is जो underperforming categories है उसको ज़्यादा डिस्काउंट करके सेल कर दूंगी price sensitive customers को, and that's how you make sure that कि जो price sensitive customer convert भी हो रहा है, और मेरी जो low performing category है या फिर जो मेरा maybe slow moving SKUs हैं वो मेरे exhaust भी जाते हैं सिस्टम से, and मुझे बाद में liquidate नहीं करना पड़े उसे। Now the next part, these are the few of the growth hacks to place an order, but as a larger if you and I can see that a few of you will be growing to a much larger extent in maybe in a couple of months or a couple of years. So one should know कि यार segment कैसे करना चाहिए मेरे user base को। So ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या स्ट्रेटेजीज है सेगमेंट करने की। few of the people यूज की कितना रिसेंटली परचेज किया था, कितना ज्यादा परचेज करा है मेरे से, कितना फ्रीक्वेंटली परचेज करता है मुझसे, few of the people uses that किस चैनल से आया है। So there are n number of techniques which can be used. Each and every technique is not right, not wrong. There are things that जो आपके लिए सुटेबल है, जो फिजिबल है, वो करना चाहिए, बट यू शुड डू समथिंग टू मेक श्योर यू सेगमेंट आउट द कस्टमर, बिकॉज स्प्रे एंड प्रे से काम नहीं चलेगा। इफ यू सी अमेजॉन वेबसाइट और अमेजॉन प्लेटफॉर्म और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी, if Facebook as a platform, Instagram as a platform show the same feed to you and me, we both will withdraw because वो personalize नहीं है मेरे लिए। तो अगर मुझे पर्सनल आप आई चेक माय फोन ऑफ माय वाइफ एज वेल कि इंस्टाग्राम पे चलो आज कुछ नया देखते हैं, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि बहुत अलग फीड है और मैं लिटरली वो फीड मुझे पसंद ही नहीं आती बिकॉज मेरे टाइप की नहीं है और मैं जल्दी से हार्डली 2 मिनट भी यूज नहीं कर पाता। So your content should be personalized. Your approach should be personalized to your customer base. And as you grow, you will reach it out to the wide audience. Maybe आप particularly 18 to 24 को reach out कर रहे हैं। As you grow your business, उसको ही reach out करोगे तो your cost of acquisition will increase because marginal cost is always high to acquire a customer. So आपको expand करना पड़ेगा। मामाअर्थ में इनिशियली हम 30+ वुमेन को करते थे बिकॉज मदर्स एंड चाइल्ड था। फिर हमें रियलाइज हुआ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हाई। बेबी कैटेगरी वैसी बहुत ही competitive category है and people generally don't try new and new product. We expanded to other categories as well. Personal care पे आए, फिर हमने फिर भी हम 25 के ऊपर ही थे, फिर हम 25 से नीचे हमने penetrate करना शुरू करा। We launched 2 price products as well and वहाँ पे and that's how the whole strategies are built. Your product should be defined based on the market acquisition as well कि आप कैसे market acquire कर। हमारा online first था तो हमने online पे maximum focus करा, right? So this is one of the techniques which is widely used in the market, which is also called as RFM, recency, frequency, and monetary. Recency कितना recently buy करा है? So on a 0 to 5 scale, if a customer has purchased recently, it's on a 5 scale. अगर बहुत पहले purchase करा है वो 0 होगा उसका score.
फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो 5 का स्कोर होगा, एंड 0 है तो उसके फ्रीक्वेंसी काफी लो होगी। मॉनिटरी वाला पार्ट इसमें डाला नहीं, बिकॉज थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जनरली जो इनके साइजेस हैं वो मॉनिटरी पे डिपेंड करते हैं, तो वो अभी मैंने इंक्लूड नहीं करा इसमें, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। सो हमने इस पे जनरली कस्टमर्स वर्क करते हैं। सो मेरे सबसे ज्यादा अच्छे कस्टमर्स है मेरे टॉप कस्टमर्स, जो मेरे रिसेंटली भी मुझसे परचेज करा है और बहुत फ्रीक्वेंटली भी परचेज करते हैं। सो दीज आर माई चैंपियंस, दीज आर माई कस्टमर जिनको मैं कभी लूज नहीं करना चाहूंगा, एंड दीज मे बी और आर द एडवोकेट्स इन द मार्केट। यही आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे मार्केट में, रेफरल लाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ लाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ दीज कस्टमर्स आर अर्ली अडॉप्टर्स एज वेल। इफ यू ड्रॉ लाइफ साइकिल करोगे ब्रांड, तो अर्ली अडॉप्टर्स ही होते हैं जो टॉप कस्टमर्स होते हैं आपके, जिन जो काफी देर ट्राइन करते हैं, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स। हॉट प्रोस्पेक्ट है कि भाई टॉप कस्टमर्स बन सकते हैं, ये काफी रिसेंटली परचेज करा है और थोड़ा फ्रीक्वेंसी भी अच्छी, बट नॉट एज गुड एज जो टॉप कस्टमर्स है। आपके जो हैवी कस्टमर्स हैं, जो वो ऐसे हैं कि काफी फ्रीक्वेंट करा है बट रिसेंटली नहीं करा है। मे बी आपके लास्ट प्रोडक्ट उनको अच्छा नहीं लगा, मे बी कोई लास्ट सर्विस में इशू आ गया। जैसे जनरली क्या होता था कि ड्यूरिंग दिवाली और ड्यूरिंग द हैवी फेस्टिव सीजन्स आपकी डिलीवरी टाइमलाइन डिले होती है, बिकॉज ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफी बूम पे होती है। तो जनरली आपकी डिलीवरी टाइमलाइन से कुछ इशू आ गया, न्यू प्रोडक्ट आपका कुछ बैकफायर कर गया, आपका पैकेजिंग कुछ डैमेज थी, तो ये इनसे कुछ कुछ तो इश्यूज हैं जो ये परचेज में बी सीजनल इश्यूज। ऐसे आप काफी कस्टमर सेट्स हैं, जैसे न्यू कस्टमर्स हो गया, रिसेंटली परचेज करा है इसने, अभी फ्रीक्वेंसी बनी है। रिसेंट कस्टमर था, परचेज किया था लास्ट मंथ इसने, बट अभी भी इसने एक और परचेज नहीं करा है। ये 2 मंथ हो चुके हैं, इसका प्रोडक्ट भी ओवर हो गया होगा इसका। ये स्कोर है, जनरली मैं 2 मंथ में डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है। ये कस्टमर वो हैं कि जो हेजिटेट कर रहे हैं परचेज करने के लिए, आई एम नॉट श्योर कि दे विल परचेज और नॉट, और 2 मंथ हो चुके हैं, इसने एक ही फ्रीक्वेंसी या फिर 2 फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा कर नहीं रहा है, तो कुछ तो इशू है इस कस्टमर में। एंड अगर ये यहाँ पे नहीं आएगा तो ये फिर या तो ऑलमोस्ट जो है लॉस में चला जाना चाहिए। सो ये भी गड़बड़ है। दूसरा है कि सबसे अच्छे जो इसको आपको लूज नहीं करना चाहिए, तो हैवी बायर्स के अलावा लॉस्ट हैवी बायर्स हो गया, कि भाई जो अब जा चुके हैं यार, 6 महीने पहले किया था उन्होंने परचेज और आपके बहुत अच्छे कस्टमर्स थे, मे बी ब्रांड स्विच कर लिया, मे बी प्लेटफॉर्म स्विच कर लिया। मामाअर्थ के लिए मैं कई बार होता था ये प्लेटफॉर्म स्विच कर लिया, यार मैं तो अमेजोन से खरीदूंगा, मैं नायका से खरीदूंगा। और आपके जो कस्टमर सेगमेंट है वो भी डायनेमिक है। 4 साल पहले मे बी जैसे मैं या फिर मे बी जो मेरी सैलरी थी वो काफी कम थी, जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम थी, तो मैं हैवी डिस्काउंट सर्च करता था। अब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, आई बाय फ्रॉम अमेजोन, चाहे मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये एक्सपीरियंस फर्स्ट लोग हैं, राइट, जो जनरली बोलते हैं कि क्रेड वाले लोग होते हैं, जो क्रेड करंटली मार्केट है। So these are the customer segments जो you can define and you should define. Maybe you should define some other factor. You should define few other factors as well. But these are the few of the techniques, because and why we are doing, because we want to make sure we target our customer sets differently. We understand them differently. We target them. This is the understanding phase. इसको और हम deep down करते हैं depending on your category. But you should target them differently. If you do the same communication with each and everyone, दे माइट बी अ केस कि फ्यू ऑफ द कस्टमर्स विल कन्वर्ट, बट आके लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको पर्सनलाइजेशन नहीं लगेगा, तो दे विल यूज यू। सो नेक्स्ट इज, एंड इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस, what should be the targeting strategy for each segment? And since these are the quite a good amount of segments, we choose only 4 segments: the top customers, new customers, hesitating customers, and lost heavy buyer customers. Our aim is to define, okay, what should be the communication strategy if I need to bring these customers in next 1 month, these top customers and these new customers, what should be my communication plan? How should I think about it? Or maybe some other insight should I use? So I think we should take a couple of minutes to do this, and maybe you can post your answers in the chats. I will answer them one by one, and then we will see what sort of recommendations we can use. Shall we start? Yeah, so if the assignment is clear, Abhishek has marked which are the segments we would like and decide what are the communication we want to send to each segment. We'll take, Abhishek, can we take 7-8 minutes? How much time do you think we want to take? I think 5 to 10 minutes will be good enough. Okay, 7 minutes. Let's try to put in between 55 10 minutes. 7 minutes. Take a piece of pen and a paper. Think about these segments and then write down what you think as a communication you want to put out to these segments, which will get them to come back, right? And then once you share that, you can be ready. And then maybe some of the examples which you found very interesting, you can put it in chat, and then we'll pick up from raised hands and then share with you some answers. Fair? Sounds good. Okay. So Abhishek will take 6-7 minutes. Huh? I'll just put Sure, some. sounds good.
Yeah, cool. Abhishek, yeah, I think we 3-4 people have raised hands and one question in one feedback in chat also. So how you want to take it? Um, Sure. I think let's take from the chat. I think Kiran has shared for the new customer education on the solution offered by the product and services, top customer, bundle up and upsell communication, lost heavy buyers seeking what they went wrong, how to satisfy what, um, how can we satisfy needs, hesitant customers, what's the help required to make purchase decision, example, offer codes, offer course, payment gateway, or delivery. I think that's quite a good summary and very right approach. Just for the top customers, if they are the top customers, they might be already get your upsell communication and everything. So we need to understand more that okay, um, what sort of additional things they will need and upsell. And उसके अलावा भी काफी because their frequency is high. They already bought around 4 5 times before. So maybe not the right way to for the upsell customer, but it can work according to your brand and everything. But what are other things which we can use? I think rest is quite good and we are on track. From Abhishek from Abhika Jewels, top customers, new collection, refining brand USP, engage them with the loyalty partners. I would recommend for the brand USP, you should engage in at a initial stage only, because brand USP, if you're communicating at a later stage, they might not be able to perceive, because initial point, the point of communication when they are the new customers or when they are not a new customer, they are a prospecting customer, you should communicate about the brand USP at that point of time. But yes, engage them with the loyalty plan is the one of the advantage you can use. I would recommend much earlier as well. Okay, but yes, hot now social proofs, highlighting written policies, offer discounts. So hesitating customers के लिए agree, totally agree. Social proofs are very important. So I think one of the books which you might have read or you should read about the influence principles, Robert Cialdini ki. So there are around 7 principles you should make sure your each and every communication should have. So one of them is social proof, other one is scarcity. So there are 7 proofs. You should work on that. So yes, and depending on your communication strategies, वो कहाँ पे होने चाहिए. So we know that top customers के लिए social proof नहीं चाहिए होंगे. So we remove that, but other things you should include. So it's a quite a good quality book, and I think there are a couple of more books as well. I will also recommend later in the PPT as well. What of which you should at least read, or maybe uh, influence, the principle for influence, Robert Cialdini. Yes, for the new customer, right dosage of the product, ask about more data, ask about referral. For new customers, right dosage of the product. So first of all, for the new customers, I would recommend ask for feedback. Okay, when you directly ask for maybe for the recommendation product and everything. So first and foremost, ask for about the feedback. So when they place the order, at that point of you can ask some data, but rather than thinking on those lines, think more about from a point of view that वहां तो हम पूछ सकते हैं, अगर नहीं करा तो इट्स मोर अबाउट फीडबैक, उनको बेटर और कैसे लगाना है, बिकॉज वो वाव मोमेंट को आप एक्सटेंड कर लेते हैं तो और बेटर होता है. सो जैसे आप स्विगी है, as soon as you place the order, so your order has been placed and if the order has been delivered before time, वो mention करता है your order has been delayed 10 minutes early, and make sure you tip your delivery partner for that and everything. So वो चीज़ यूज करना बहुत important होता है. Now for new customers, you can ask for data, but you need to make sure that your brand communications, he or she is in line with the brand. For us, मामा अर्थ के लिए we make sure उसको पता है कि उस पे ऑर्डर पे हम प्लांट लगाएंगे, because we know that that's the major hook जो हम प्ले कर सकते हैं. किसी को याद ना रहे कि ब्रांड यूएसपी क्या है, टॉक्सिक फ्री, ये सब तो आई थिंक बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं, तो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है. बट वी प्लांट अ ट्रे विद ईच एंड एवरी ऑर्डर, दैट्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वी आर क्रिएटिंग. So we make sure we run ads as well when a customer is placing ads, and that's our first time customer. वो brand recall वहीं पे क्रिएट हो जाता है, तो कभी भी किसी को मामा अर्थ याद है कि हाँ यार वो प्लांट लगाते हैं. So that sort of communicate, and we tested a lot. ऐसा नहीं कि हमने day one पे डिफाइंड था, तो after a couple of years we defined कि अच्छा this is the thing which we need to improve. And
Hesitating customers testimonials, right? Social proofs are the ones, social and other things which are there in the डिपेंडिंग ऑन क्या वो हेजिटेट क्यों कर रहा है वो बेटर है, बिकॉज हेजिटेटिंग कस्टमर मे बी अ केस होगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर आपका अच्छा नहीं गया, तो एनपीएस स्कोर से आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा और कॉलिंग अ कस्टमर विल बी गुड. सो how we approach this problem is we talk to a lot of customer from this cohort. डेटा तो है हमारे पास एनपीएस का सब कुछ का, उससे यू गेट अ डायरेक्शन, बट यू ऑल्सो टॉक टू दिस कस्टमर्स. तो यू फर्स्ट गेट टू द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम्स क्या है इन कस्टमर्स की, क्यों ये हमसे नहीं खरीदते हैं. मे बी अ केस हेजिटेटिंग कस्टमर्स आपको 4 चीजें बताएंगे जो आपको शायद पता ही नहीं थी, कि यार मैंने आपसे वो प्रोडक्ट खरीदा था बट उस पर इतना इफेक्टिव नहीं था. और वो क्यों नहीं था, जैसे अब सिंपल है, जैसे हमारे सबसे ज्यादा बैकलैश आता है हमारी एक अंडर आई क्रीम. अब आपके जो डार्क सर्कल्स हो मैक्सिमम किसी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, एंड कुछ आपके अंडर आई हैं जो आपके कुछ अलग कारणों के कारण होते हैं, बट अब डेफिशिएंसी है तो कभी भी वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, एंड कस्टमर नीड टू अंडरस्टैंड इट, बट वो अवेयरनेस नहीं होती, तो वहां पे आपका बैकलैश आता है. तो वी मेड श्योर दैट इन द कम्युनिकेशन वी ऑल्सो कम्युनिकेटेड कि डेफिशिएंसी वाला पार्ट भी है, एयरफॉल भी है, कि इतने परसेंट लोगों को बेटर फीडबैक मिला है, एंड दैट्स हाउ द प्रोडक्ट शुड बी परसीव. बिकॉज वी नो दैट अगर हम सॉल्व ही नहीं कर सकते तो हम प्रॉमिस ही क्यों करें, तो हमने प्रॉमिस भी रिलीज कर देते हैं. जहां पे प्रॉमिस है वहीं पे अपना मतलब व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट इज what you can't deliver, don't promise. We don't want negative customers in the market. We will grow at a slower pace, but we will not create a dissatisfied customer in the market just because मैंने गलत promise कर दिया. Right. So I think most of you are on the right track. If some of you want to share in the by unmuting yourself, you can also share. I think most of the things we have covered as well. I think we can go ahead. And so this we have also created a summary की activity from us क्या क्या चीजें हो सकती हैं. Let's start with the champions of the top customers. Reward them. Can be early adopters of the new product. Will promote your brand. Make them send referrals. कि आप referral दो यार हमें, आप तो review दो. Few हम तो पहले जैसे when I was in Spinny and Qmite, we used to record a testimonial from these customers. वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई नहीं थी बट वो बहुत सेटिस्फाइड, जैसे भी एनपीएस हाई होता था, काफी खुश थे, काफी नीड थी, काफी इंटरेक्ट करा है हमने. तो वी यूज्ड टू रिकॉर्ड अ टेस्टिमोनियल ऑफ द कस्टमर एंड टेक द कंसेंट कि आपका टेस्टिमोनियल हमें यूज करना है इन आवर कम्युनिकेशन. पीपल आर जनरली हैप्पी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में, स्पेशली इनटू द टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज. ऐसे ही सपोज इफ यू टेक अ कस्टमर लूजिंग बट एंगेज्ड, जो हाई फ्रीक्वेंसी है, so you need to make sure that you are interacting the customer a lot more. high discount उसको आप दे सकते हैं जो लॉस्ट होने वाला, बिकॉज आपको पता है इसको लूज नहीं करना चाहिए मुझे. अब जो लॉस्ट हो चुका है उसके लिए हम ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं. यू कैन डिफाइन एट अ पर्टिकुलर डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कस्टमर द कस्टमर इज. तो हमने एक डिफाइन करा पोटेंशियली, एक सेगमेंट हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियली डोरमेंट, एक सेगमेंट हम डिफाइन करते हैं एक सेगमेंट हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियली, यार एक ये हैवी बायर्स है, ये बायर्स है. तो हमने 3 सेगमेंट डिफाइन करे वो हमारा इन ईयर 2 कि फर्स्ट इज मेरे न्यू कस्टमर्स है, उस पर फोकस करूंगा मैं. सेकंड है मेरे टॉप कस्टमर्स या फिर टॉप के आसपास जो कस्टमर्स है, बिकॉज इतना डेटा होता नहीं हमारे पास कितना कुछ कर पाएंगे, तो मैंने इनको बकेट को कंबाइन कर दिया. एंड लास्टली मैंने डिफाइन करा यार उनको 1 साल हो चुका था, तो हमने डिफाइन करा कि मेरे डोरमेंट पोटेंशियली डोरमेंट कस्टमर कौन से होंगे जो चर्न हो सकते हैं, उनको मैं कैसे लेके आऊं, मैं जो वेबसाइट विजिट नहीं करी है, सब कुछ नहीं करा है, और जो मेरे चर्न हो चुके हैं. जो चर्न हो गए हैं उसमें मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट डाल दिया, बिकॉज वो रिक्वायर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दे आर लॉस्ट. तो पोटेंशियली डोरमेंट है, आई गिव देम एक्स्ट्रा बक्स टू सॉल्व देम. मैंने उनको फ्री भी दे दिया नेक्स्ट ऑर्डर में, या फिर मैंने कुछ और दे दिया जो उसका सो दैट उसको अपसेल कर सकते हैं. सेकंड एक फनल आती है कि आपका जो ऑर्डर है उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट भेज देते हैं. इफ समवन हैज परचेज्ड द फेस वॉश, मैंने उसका स्मॉल साइज फ्री भी भेज दिया 25 ml का शैम्पू का, यूज करा. इफ प्रोडक्ट इज गुड, I like the product, I should use it again, and they will buy a full size product. तो आपके न्यू कस्टमर स्ट्रेटजीज में ही वो कवर हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द थिंग इफ यू डिवाइड द कस्टमर सेगमेंट्स इनटू दीस पार्ट्स, आपको इनसे बात करके रियलाइज हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में ये कर देता ना मैं, तो ये कस्टमर कभी लूज ही नहीं होता. ये कस्टमर बहुत बड़ा होगा आपका, जो आपकी लोएस्ट कोहर्ट है नए वाली, आपकी बहुत बड़ी कोहर्ट है. ये सबसे एक बड़ी कोहर्ट होती है न्यू कस्टमर, रीसेंट कस्टमर, हेजिटेटिंग कस्टमर, ऑलमोस्ट लॉस्ट एंड लॉस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है या फिर 1 या 2 है. ये हाईएस्ट कोहर्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स. टॉप वाली कोहर्ट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट होती है, या फिर ये वाले कॉर्नर पे, राइट. सो इन कस्टमर्स के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो हमें बहुत डिफाइन करना है, और इन योर स्टेज एक्विजिशन स्ट्रेटेजी कैसे ट्वीक कर सकते हैं,
right? I know that if a customer is buying me X category, the repeat rate is high, I will try to sell more. So मेरा जो budget है मैं optimize कर सकता हूँ, maybe some metrics like लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की क्या है और किस कैक पे एक्वायर हुआ था. तो मैंने एक टर्म डिफाइन करी, लाइफ टाइम वैल्यू, कैक टू एलटीवी रेशियो. अगर वो मेरे लिए बेटर है तो मैं उसके लिए कर लूंगा. मेरे चैनल पे 100 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है उसको एक्वायर करने के लिए, बट उसके लाइफ टाइम वैल्यू 2 टाइम्स है, तो मैं उसको ज्यादा एक्वायर करूंगा उस कस्टमर को. जनरली मेरे एफिलिएट चैनल है, वहाँ पे कस्टमर जनरली दोबारा परचेज नहीं करते बिकॉज वो डिस्काउंट सेंट्रिक होते हैं और मैं डिस्काउंट तो देना चाहता नहीं, तो मैं वहां से कम एक्वायर करूंगा. बट अगर वो कॉस्ट कम दे रहा है, मुझे 100 रुपए में दे रहा है कस्टमर, तो शायद ज्यादा एक्वायर कर ले. So those things you need to build and analyze, and depending on your brand, depending on what sort of discount strategies you have, you can vary from one place to another, but don't increase discounts for each and every segment. Discount is not a solution. If you increase discount for each and every segment, eventually आपको acquisition भी उसी discount पे करना पड़ेगा, and eventually फिर retain करने के लिए और discount देना पड़ेगा आपको. So don't do those things. Work on the perceived value of discount which we discussed earlier. This is a summary. I think for this session it will be too heavy, but you can depending on, since most of you are quite new and at initial stage, you can read it later. We will share the slides, but it's quite exhaustive. जो हम follow करते हैं, जो हम बनाते हैं, तो हमने उसको एक summary बनाने का कोशिश try करा है. So just to also give you a brief, we at Mamaearth, we are house of brands. We already have 5 to 6 brands, and niche brands काफी small है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, playbook बना के रखते हैं कि यार किसी को भी अगर ये प्लेबुक फॉलो करके ब्रांड ग्रो कराना है तो ये कर सकते हैं. 80-20 रूल है. इन 20% चीजों से 80% तो ग्रोथ हो जाएगा, बाकी 20% के लिए बाकी एफर्ट करने पड़ेंगे. या सोनम, गो अहेड. Hi Abhishek. So I just have a more generalized kind of question. So in the category that we are, so we are doing books and we are doing games for children. So what happens is that once you have a certain product, you may not need to come back to buy it. So genuinely the issues that we face is how fast should we keep adding something? So is there like a good time period which says, okay, now the customer likes our concept, they like the kind of books we are doing, but they've bought out of the 10, 15 products we offer, they've bought 8. So now how do we sort of strategize as to when should we keep adding more, or we should just focus more on getting in new customers? So first of all, I think if for each and every, so I will provide a generalized answer, generalized approach, and then we can move to a more targeted approach. So for each and every product, one should concentrate on कि उसका usage हो रहा है नहीं हो रहा, because if you are buying a product, अगर उसने read नहीं करी तो next book कहीं करेगा ही नहीं. So you should introduce your communication strategy in such a way that the usage will increase. Okay, in terms of gaming as well, in terms of, so जब Xbox ने launch किया था तो online platform पे उसने एक community बना दी, and community center पे they started कि top कौन है, second कौन है, third कौन है, and that's how the whole system was built. Because नहीं तो पहले piracy बहुत ज़्यादा होती थी. Omnight culture we have created. So I'm not sure, I'm not very keen about the game, not very experienced about the gaming center, but these are the few things which you can introduce. If a customer has read those things, visited your community, then you can upsell again. But you need to decide कि वो जो wow moment introduce हो रहे हैं वो कहाँ पे introduce हो. So sometime you need to plot those wow moment as well. कि वो wow moment मैं plot कर देता हूँ, उसके बाद हम कर लेते हैं कि suppose जनरली क्या होता है स्टार्टअप्स की गेमिंग होते हैं, जो सपोज वेबसाइट पे गेम्स होते हैं कि स्पिन अ व्हील हो गया, या फिर कुछ क्विजेस हो गए जो वेबसाइट जैसे अमेजोन करता है, आपको कुछ क्विज प्ले कराता है, उसका बोलते हैं यू नाउ यू कैन बाय, आप एंजॉय भी करते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है कभी लेते हो. सेम क्रेड आल्सो डू, गेम कराता है फिर आगे ले जाता है. सो those things, so these are the introduction of the false wow moments, or the deliberately introduction of the wow moments into your customer journeys. To specifically answer your question, you need to make sure that you introduce those wow moments, and then I think if I'm not sure about the games which you are using, if you are not children, it's not on the so generally मैं use करता था अपने niece के लिए, I forgot the smart TV. तो मेरे पास वो खुद ही आ जाता था, मामा मुझे ये नया चाहिए, एंड आई देन अगेन सर्च स्मार्ट टीवी पे क्या है, तो आई कांटेक्ट द फाउंडर कि यार 6 गेम है जो मिल पा रहे हैं फॉर दिस कैटेगरी, व्हाई नॉट यू इंट्रोड्यूस. सो if your brand, if your child, or if they are lacking the product, then they will eventually buy, because I know that your final decision maker will be the parents.
एंड देन हाउ दे नीड टू बी कन्विंस. तो आपको बच्चों से कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे और वो कैसे इतना एंजॉय कर पाएंगे, उस पे फोकस करना भी इंपॉर्टेंट होगा. तो वहीं से वो साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाएगी. Okay, thank you. और मे बी यू कैन क्रिएट द कम्युनिटी एज वेल, योर प्लेस ऑफ पिक ऑफ योर चाइल्ड, जैसे हेड्स ऑफ और टेल्स करता है कि आप वो पिक इंट्रोड्यूस कर दो अपने डॉग की, एंड दे विल पोस्ट इट उसका, एंड उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिटी अराउंड करते हैं. नाउ दे आर टाइंग अप विद द lot of pet clubs as well. You can visit the pet club, post the pic post करेंगे, सब कुछ करेंगे, and it's quite a good amount of engagement both for the dog pet lovers as well, pet parents as well as the dog. उसको जो वो खुश देखते हैं अपने बच्चे को, जैसे I am not a parent but I am a pet parent, तो I know कि मैं सब उसके लिए ही करता हूँ कि यार इसको अच्छा लग रहा है तो करते हैं. तो I think वो वाला चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम सिस्टम में. Thank you, thank you. Right. So if we work on these fronts, so I think there are two things. Lifetime value हम कभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे. कस्टमर जब एक्वायर हुआ विद इन 3 मंथ्स कितनी वैल्यू है, वैल्यू का मतलब कितना उसने हमें पे कराया अब तक, 6 मंथ्स में कितना पे कराया, 12 मंथ्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर द कस्टमर हैज प्लेस्ड, 24 मंथ्स. बाकी जो स्टार्टअप्स, जो एडवांस लेवल स्टार्टअप्स होते हैं, वेरी डीपली वर्क ऑन द पीएनएल, दे आल्सो कैलकुलेट दिस लाइफ टाइम वैल्यू ऑन द प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, CM1 margin, CM2 margin. So depending on कि what level you want to go, you can introduce किसको revenue पे करना है, gross margin पे करना है, किस level पे करना है. And same goes for retention rate, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months की, depending on product क्या होना चाहिए. If you started working on these cohorts, eventually you will see your repeat rates started increasing. कि जैसे पहले आपका Jan 20 में इतना रिपीट रेट था, तो आपको अप्रैल में इम्प्रूव हुआ और वो इम्प्रूव हुआ, और Jan 21 में आपके इनिशियल रिपीट रेट से इंक्रीज होना शुरू हो गई. एंड इवेंचुअली जो 100 कस्टमर में से पहले 10 लोग रिपीट होते थे, यू स्टार्टेड सीइंग दैट 20 customers are now repeating and you are getting a amount of revenue from the repeat. Initially when we started Mamaearth, only 10% of the audience customers were repeat. Now currently we have 60 to 70%, which is quite good in terms of the personal care industry जिसपे हम डील करते हैं, right? So this is the impact you will see over time. You will not see within months, you will see over a year that your repeat rates are increasing. The lifetime value over a couple of years, हम 10% ही लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज कर पाते हैं कस्टमर की ओवर एन ईयर ऑनली, और ये भी हमारे लिए बहुत अचीवमेंट लगता है हमें, बिकॉज वो एवरेज आउट सब पे होती है, बिकॉज आपके 30% लोग ही रिपीट करेंगे और उससे आपको 100% का इंक्रीज करना है लाइफ टाइम वैल्यू. So these are the I think you will cover detail in the next session, but these are the things, the KPI we should measure, and काफी easy है measure करना. अगर I think Shopify में कुछ चीजें तो आ भी जाती हैं, but if you are using some other tools, these things will come. Now coming to the loyalty program, since let me go through first that why should I launch a loyalty program? आपके लिए needed है कि भी नहीं है क्या? जैसे I think few startups होते हैं, यार मैं तो बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ, लॉन्च करूँ नहीं करूँ, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है कि बिजनेस कैसे ग्रो होगा, एवरीथिंग. सो this is totally my take. When should I launch a loyalty program? So पहले if you are sure about the product market fit, if you are sure कि यार यही प्रोडक्ट है, ये TG है, ये मेरा प्रोडक्ट है, और इसी USP और इसी ब्रांड प्रोपोजिशन से मुझे सेल करना है, then you are okay. If you solve the customer satisfaction, NPS आपका गुड है, आपका अगर NPS नहीं है तो आपको लॉयल्टी प्रोग्राम बना लोगे तो भी कस्टमर बाय नहीं करेंगे, because they are not satisfied with your services, they are satisfied with the product. And it can be category of brands जिसमें purchase कर रहे हैं. If it's not a frequently bought category, it's a one-time category, then I think you should not launch. But it's a frequently bought category, at least once a month या फिर once in a quarter है, तो I think वो आपको कर सकते हैं, because जैसे लेंसकार्ट का लॉयल्टी प्रोग्राम इतना चलता नहीं है. Because क्यों? Because वो मे बी 6 months या फिर 12 months में एक बार बाय करना होता है, तो उनको बहुत एग्रेसिव डिस्काउंट देना पड़ता है कि वो फर्स्ट टाइम उसी परचेज में ही वो कंपनसेट कर ले, नहीं तो वो लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट होता नहीं, राइट? जैसे लिशियस है, उसका लॉयल्टी प्रोग्राम इज क्वाइट गुड, सो वहाँ वो काफी वर्क करता है. फ्रेश टू होम का काफी वर्क करता है, डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में बहुत डिपेंड करता है टाइप ऑफ बेनिफिट यू आर डिफाइनिंग. ठीक है, सो दिस इज, एंड स्पेशली फॉर अस वी हैव लॉन्च लॉयल्टी प्रोग्राम एज वेल. हमने पहले किस लिए नहीं किया था, बिकॉज there are limitations, tech की, everything, and we were focusing on some other ways to playbook बना रही है brand launch करना. But I think from at least when you have all these 3 problems solved, you should launch a loyalty program irrespective of the month. Okay, when you are sure कि product market fit है, scale पे जा सकता है product or not, because if you're not able to go on the scale, because and then loyalty program थोड़ा सा justify नहीं हो पाएगा. कमिंग की अब लॉयल्टी प्रोग्राम डिफाइन कैसे करना है, तो सेटिस्फेक्शन मस्ट है. सो हम इसको राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे. तो
पहला सेटिस्फेक्शन है, पहला इजी टू यूज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इजी होनी चाहिए लॉयल्टी प्रोग्राम की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये एक्स करोगे तो ये जाएगा, वो करोगे तो ये जाएगा। जितने कॉम्प्लिकेटेड लॉयल्टी प्रोग्राम है चलते नहीं है इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया इस पर। फंक्शनलिटी बहुत सिंपल होनी चाहिए, एक्स करना है वाई मिलेगा, ये ठीक है। जितने सबसे सिंपल लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं इट्स मोर लाइक यार आपको X% एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो बहुत सिंपल रहता है। क्वालिटी एंड ट्रस्ट, कम्युनिकेशन क्वालिटी, ओवर कम्युनिकेट नहीं करूंगा बिकॉज वो आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देगा, सब कुछ देगा, तो ओवर कम्युनिकेटेड नहीं, कम्युनिकेशन नहीं करना है। तो अगर वो करते हो आप तो फिर वो कहेगा यार क्यों मुझसे लॉयल्टी प्रोग्राम लिया अभी। अर्बन क्लैब का काफी अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम है, फ्लैट 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो वो काफी बेसिक रहता है। कस्टमर सर्विस, तो आप प्रायोरिटी कस्टमर सर्विस कैसे मिलेगी, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, जो एयरटेल ने लॉन्च किया था एयरटेल ब्लैक पे, तो कॉल विल बी पिक्ड विद इन 1 or 2 मिनट्स, बाकी लोगों का पिक ही नहीं करा उन्होंने, इनका पिक कर दिया। सो ये भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिकॉज वो आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहीं लीक तो नहीं हो रही है, और आजकल जैसे टेक वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स कि इसको मिसयूज नहीं कर रहे हैं हम कहीं पे भी। एंजॉयमेंट, एस्थेटिक्स, उसको भी एंजॉय भी आ रहा है, गेमिफाई कर रहे हैं हम उस चीजों को, तो वो वाला भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 थिंग्स है जिसमें लॉयल्टी प्रोग्राम की सेटिस्फेक्शन आती है, एंड फाइनली वो लॉयल्टी प्रोग्राम डिफाइन करना चाहिए। मस्ट हैव्स है, few of the things might not be must have, like security and privacy and customer service, because you might not be dealing in those industry, but rest of the things are the must have, and you must define a loyalty program based on that. Now coming to how to start a loyalty program that works, तो फर्स्ट आता है हमारा चूज द नेम ऑफ प्रोग्राम। वो सबसे बेटर कि नाम क्या है प्रोग्राम का। अगर नाम में ही कुछ गड़बड़ है, या फिर वो आपकी ब्रांड सिग्निफाई नहीं कर रहा है, या फिर उसको जो बेनिफिट है उस पर निकल के नहीं आ रहा, तो कस्टमर माइट नॉट एबल टू बाय इट, उसको रिजेक्ट ही कर देगा हमेशा के लिए, राइट। सो नेम ऑफ द प्रोग्राम इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसमें ही आपको सब कुछ क्रक्स निकल जाना चाहिए ब्रांड का, राइट। जनरली ब्रांड का नेम भी डिफाइंड ऐसा होता है कि क्रक्स पूरा निकल जाना चाहिए, राइट। डव है, डव से वो सॉफ्ट, मैच्योर, एलिगेंट, वो वाला फील आता है, तो वो डव ने वैसे ही डिफाइन करा पूरी चीज। तो नेम से ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होना चाहिए प्रोग्राम। इट शुड नॉट बी लाइक डव, इस आजकल इनसाइडर वो ज्यादा चलते हैं, बट यू शुड वर्क ऑन डोज प्रोग्राम। ऑफर रियल वैल्यू, लोग क्या करते हैं जनरली कूपन्स दे देते हैं एक्स्ट्रा, जैसे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देते हैं, पॉइंट्स की मल्टीप्लायर बहुत कम होता है एंड एवरीथिंग, दोज आर गिमिक्स, कभी वर्क नहीं करता, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमारे लिए, जो मेरी लर्निंग है, कि फ्री में लॉयल्टी प्रोग्राम देने का कोई फायदा नहीं है। कि आप बोलोगे कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम में एनरोल होगे, नहीं, देयर शुड बी अ कमिटमेंट फ्रॉम द कस्टमर दैट आई वांट टू एनरोल इन द लॉयल्टी प्रोग्राम। उसमें आप किसी ऑफर के थ्रू उसको फ्री दे दो, बट ऐसा नहीं है कि बैक पीछे से आपने उसको एनरोल करा दिया एंड यू आर सेइंग नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अ लॉयल्टी क्लब। इट विल नॉट वर्क। हैपेंस विद मेक माई ट्रिप, बिकॉज आपको ऑटोमेटिक एनरोल करा देता है वो। आप जनरली मेक माई ट्रिप पे नहीं जाते, फिर आप 4 वेबसाइट जाते हो तभी फ्लाइट बुक करते हो। So that's how that is. You should not directly pitch a loyalty program कि आप enrolled हो गए हमारे loyalty program में, no. Tap into the customer values. So customer values में भी आता है, you ask customer whether you want to enroll the loyalty program as well as what they feel, what they believe, why they believe in the brand, वो भी attach होना चाहिए। जैसे हमारे लिए था कि पर्पस होना चाहिए ब्रांड के लिए, तो हमने प्लान गुडनेस इंट्रोड्यूस करा, हमने उनको कुछ सरप्राइज गिफ्ट था वो प्लान करा। तो हमने वो कस्टमर क्या चाहता है एक्चुअली आपसे, वैल्यूज क्या है, उस पर सिंक करना है आपको लॉयल्टी प्रोग्राम, ब्रांड को भी लॉयल्टी प्रोग्राम को भी, उसको एनहेंस करना चाहिए। ऑफर अ वैरायटी इन 2 की वेज, फर्स्ट ऑफ द कस्टमर एक्शंस। अब ये सब्जेक्टिव है, जनरली मैं इतना रिकमेंड नहीं करता कि जैसे सबसे छोटी ब्रांड्स है उनके लिए फिर भी होता है, बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं करना चाहिए। कस्टमर एक्शंस हो गया कि आप शेयर कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, सब करेंगे, तो गेमिफाई करना अच्छा होता है, बट जनरली ये बैकफायर भी कर जाते हैं, मतलब वो कस्टमर को लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर टीजी क्या है। अगर आपका टीजी जेनजी है, मिलेनियल्स है, तो ये सब करने में उनको मजा आता है कि आपको शेयर करोगे तो ये मिल गया, ये करोगे तो ये मिल गया, तो आप 10 लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। दैट्स हाउ द फैम पे ग्रो इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। एंड उसके बाद आपका जो लॉयल्टी है वो ब्रॉड कस्टमर बेस को टारगेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली 10% ऑफ कस्टमर बेस इज लाइकिंग दैट ऑफर योर प्रोग्राम और रिवॉर्ड। इट शुड बी टारगेटेड फॉर द ब्रॉड यूजर बेस। maybe it is meaningful for only 30% or 40%, but आप प्लान उनके लिए एटलीस्ट करें तो बेटर होगा। उन 10% के लिए प्लान करोगे तो फिर वो लॉयल्टी आपने लिमिटेड अमाउंट के लिए रख दी है। मेक इट इजियर एनरोल, जस्ट अ टैप क्लिक, जस्ट अ टैप क्लिक, जैसे ऑर्डर प्लेस कर रहा है तभी एनरोल कर दो। अर्बन क्लैप इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। जैसे आप बोलते हैं यार आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का, जस्ट एनरोल, इट्स अ 299 प्रोग्राम, जस्ट टैप क्लिक, ऐड टू कार्ट, गो। गेमिफाई, लोगों को गेमिफाई करने में मजा आता है। Mature brands don't do this gamification, but an initial stage brand generally do this gamifications, right?
So these are the things one must use to define a loyalty program. And I must say, at some point of time, you need to think whether should I define a loyalty program or not. And this will really help. हमारी जो loyal customers हैं, जो increase करते हैं, वो मतलब पहले क्वार्टर में एक बार परचेज करते थे, मंथ में एक बार परचेज करते हैं, और कुछ करना भी नहीं पड़ता, जैसे एक रिमाइंडर भेजना पड़ता है हमें कि ये है प्रायोरिटी, कस्टमर सपोर्ट रखना होता है। दो चीज हम करते हैं कि गिव देम एडिशनल ऑफर। जो भी आपको, हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है is more defined on, you will get additional freebies with each and every offer, whatever offer you use. हमने काफी टेस्ट करा, कस्टमर से बात करेगा, ओवर 6 months हमने पूरा बिल्ड करा, एंड दिस इज द ऑफर, ओवर एंड अबव आपको ये मिल जाएगा। सेकंड है कि प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट भी ट्राई टू गिव, उस पे हम बिल्ड कर रहे हैं, बट जनरली सिंस हमारे जो चैट है वो लेस देन 30 सेकंड्स में आंसर हो जाते हैं, फोन कॉल हम नियरली लेस देन 100 सेकंड्स में आंसर कर देते हैं, पिक कर लेते हैं। सो दोज ऑल थिंग्स आर हैंडल्ड, तो वहां पे इतना हमारे पास लोड नहीं आता है। बट यस, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर दीज कस्टमर्स आर एक्चुअली भगवान टाइप है आपके लिए, तो वो उस अगर मेथोलॉजी से बिलीव करोगे तो एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। सेकेंडली जो हमें बेनिफिट मिलता है कि इफ आई बिल्ड अ प्रायोरिटी सिस्टम फॉर दीज कस्टमर्स, माय होल सिस्टम स्टार्टेड बिल्डिंग इन अ मच बेटर वे। जैसे मैंने इन कस्टमर्स के लिए ट्राई करा कि लेट्स डू अ सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी, my whole delivery tag for other customers as well also improved because similar cost में हमने negotiate करके उसको improve कर दिया, तो मेरा पूरा NPS ही ऊपर हो गया डिलीवरी का। And I think we already discussed the when should I ask customers to buy a wow moment. You need to introduce that wow moment, and जैसे ही wow moment है, कस्टमर जब परचेज कर रहा है, परचेज कर चुका है, तभी पिच कर दो उसे बेस्ट पार्ट है। या फिर जैसे उसने कुछ अचीवमेंट करा, हे थम्स अप, जैसे कल्ट है, each and every time you do वर्कआउट और जैसे सीरियस करता है, अपसेल करता है दूसरा प्रोडक्ट कि भाई you should also try mind fit, you also try show sugar fit depending on what sort of profile you have, maybe dedicated training sessions भी ले सकते हो आप। So wow moment introduce करना सिस्टम में। So cult website is a classical example of couple of good books in the market। एक power of atomic habits है, इसको उन्होंने पूरा एक नया प्रोग्राम बनाया है, cult transform, राइट। सो वो भी एक बुक पे बना हुआ है, और वो सारे सिस्टम्स को यूज करते हैं। वाव मूवमेंट को तो बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका एनपीएस आता है उसके नीचे वो आपको एक अपसेल भी कर देते हैं, कम्युनिकेशन भी प्लान कर देते हैं। सो दोस हाउ द होल सिस्टम इज डिफाइंड फॉर द कल्ट, एंड इट्स क्वाइट अ गुड एग्जांपल। वो टाइम टू टाइम बिल्ड होगा, इट्स नॉट बिल्ड फ्रॉम अ डे वन, but you need to play with the customer psychology on that. The retention part is more with the customer psychology, loyalty part deeper into the psychology, right? Going ahead, and finally maybe the customers are not loyal, let's reduce the churn। कि हमें churn भी तो reduce करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि यार loyal नहीं हो रहा तो उसको हम छोड़ देंगे, नहीं, जितना minimize कर सकते हैं वहाँ पे। So there are few of the growth hacks which we used। तो हमने एक वॉलेट इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने बोला कि यार देखो वॉलेट में आपके 100 रुपए डाल दिया हमने, 24 आवर्स के लिए वैलिड है, प्लेस एन ऑर्डर, देखते हैं क्या होता है, कितने को लोग प्लेस करते हैं। एंड मिंत्रा क्लासिकली यूज दैट, एंड मिंत्रा ने आई थिंक लास्ट ईयर तो काफी प्रोमिनेंटली यूज करता था कि वॉलेट में आपके 100 रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए, वैलिड फॉर 24 आवर्स, प्लेस एन ऑर्डर, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कम बैक। एंड आई हैव रिड्यूस्ड द चर्न जस्ट बाय सेंडिंग अ पुश नोटिफिकेशन $100, right? So this is the first strategy. Wallets are available in the Shopify as well, so you can use that. Order confirmation and feedback survey. So जैसे ही आप order feedback and confirmation survey आता है, तो आपसे बोलो कि यार हमसे बात करनी हुआ, you're not purchasing from us, क्या हो रहा है। कई बार कस्टमर बात करेंगे, व्हाट्सएप पे जनरली कस्टमर रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि यार ये इश्यूज था। सो व्हाट फीडबैक आई हैव गॉट इज कि जब हम बात करते थे कस्टमर से, तो कस्टमर ने बोला है मुझे तो मैंने 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, आपने एक ही भेजा मुझे, या फिर एक प्रोडक्ट नहीं आया। मैंने कहा व्हाई हैवंट यू कम्युनिकेटेड, कहते हैं अब एक प्रोडक्ट के लिए क्या बोलता मैं आपको। सो those sort of feedback we have got when wow, and that customer had not purchased for next 3 months due to that कि आप तो टाइम पे बेचते नहीं। I have started purchasing from Amazon, we sent a free product, I'm really, and apologies के साथ हमने कुछ और freebies भी सेंड करे। now those customers are loyal customer, now वो मुझे डायरेक्टली कॉल भी करते हैं। तो वो हमने प्रॉब्लम्स बिल्ड करी कि क्या हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना फीडबैक लेते नहीं थे कस्टमर से। नाउ वी स्टार्टेड टेकिंग द फीडबैक, फोर्सफुल फीडबैक, 4-5 बार सर्विस जाता है, ईच एंड एवरी कस्टमर कम्युनिकेशंस के बाद या कस्टमर कॉल के बाद जो सपोर्ट पे आ रही है उसके बाद कम्युनिकेशन जाता है कि प्लीज रेट अस, प्लीज टेल अस हाउ वी कैन इंप्रूव। वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वहां चर्न वहीं पे रुक जाएगा आपका। एंड लास्टली जो हमने आरएफएम मॉडल बनाया है उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे आइडेंटिफाई करो कौन एंगेज है कौन नहीं है। जो आपका पुराना यूजर है, आपकी वेबसाइट पे दोबारा आ गया, चलो आज तो वो इंटरेस्टेड है आपने,
आपके एड पे एंगेज हो गया, इंटरेस्टेड है आपने, यू स्टार्टेड यूजिंग दैट, उसको ही टारगेट करो, सेगमेंट आउट एंड टारगेट, सेगमेंट एंड टारगेट, सेगमेंट एंड टारगेट, दैट्स द बेस्ट अप्रोच इन द मार्केट. यू नीड टू मेक, आप डॉर्मेंट कस्टमर आपका फ्यूचर में मेजॉरिटी कस्टमर्स हो जाएंगे, मे बी 3 years 4 years डाउन द लाइन. हमारे लिए डॉर्मेंट कस्टमर मेजॉरिटी कस्टमर्स है करंटली. तो my one dedicated team is working on how to reactivate these dormant customers, and their only approach is to how to create better segmentation. जो different modeling techniques उन सब use करते हैं, जो काफी advanced है, which will not cover here, but if you want to discuss, we can discuss it later point of time. More data clicks, this is the a bit advanced कि browsing data से और कैसे deep जा सकते हैं. Category buying patterns क्या है, जैसे हमने define कर रखा है कि किसको किस पे upsell करना है, वो data से निकाला है. किस डेमोग्राफी को कौन सी एफिनिटी ज्यादा है, तो उसका हमने स्कोर निकाल लिया है. फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. गैप बिटवीन परचेजेस कितना है, सपोज अगर 2 weeks से परचेज नहीं किया तो मैं किस सेगमेंट को कितने टाइम बाद करूंगा. तो ऑल डेटा पॉइंट्स आपको आप निकाल सकते हो, एंड यू कैन डीप डाउन बेस्ड ऑन दीज डेटा पॉइंट्स कि कब कम्युनिकेट करना है. तो दीज आर गुड टू हैव एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कस्टमर बेस. We at Mama started using the data points after 2 to 3 years. So, but हमारा scale भी काफी high. So we started using that, and we rely on these. These are the level 2 for us, and there are level 3 and level 4 for us. We started working the prediction modeling as well for our customer base. Payment matter कौन सा है? We know that कि अगर COD है तो less likely to repeat है. Prepaid वाले तो और COD पे वो RTO भी कर देगा. So we introduce a 5% additional discount to make sure prepaid में convert हो जाए, and उसका हम repeat rate और RTO दोनों कम कर लेते हैं, right? कब उसको मैंने ब्रांड इंट्रोड्यूस करा, कब उसको एंगेज करा, परचेज कब करा, उसकी साइकिल क्या है. जो कस्टमर आपका एक दिन में ब्रांड इंट्रोडक्शन से परचेज कर लेता है, वो कन्विंस्ड ही नहीं है आपके ब्रांड से. उसने कहीं ऑफर देखा या फिर किसी से बात करी थोड़ी सी, वो कर लिया, उसको ब्रांड के बारे में पता ही नहीं. तो उसको आपको ज्यादा जज करना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि कस्टमर मतलब एक्चुअली ब्रांड इज क्या है. ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेजर करना. Generally, tool like MoEngage can do that, or maybe if you are working on a tool like AppsFlyer or maybe internal source systems, but it's quite a good quality data. कितना customer को कितना target करना, because future में the CPMs are going rapidly high, and your brand engage या फिर करने के लिए in terms of communication, in terms of what is the brand purpose, USP, you need to show a long video format ads. तो ये थोड़ा difficult होता है, but it's quite high. चैनल लॉयल, किस चैनल से लॉयल है, गूगल से दिखाऊं, फेसबुक से दिखाऊं, मे बी एफिलिएट से दिखाऊं, कहाँ से दिखता है. जनरली ये लॉयल्टी मैक्सिमम एक पर्टिकुलर एफिलिएट वाला प्लेटफॉर्म आता है. कैशकर हो गया या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो गया, मे बी पैसा वापस, और ऑन दोस्त जो कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं लोगों को. डिलीवरी टाइमलाइन, जैसे डिलीवरी टाइमलाइन लेट करी, हमें पता है कस्टमर को, हम तो व्हाट द टाइमलाइन वी हैव प्रॉमिस, उससे डिले होता है तो हम अपॉलॉजी डायरेक्टली चले जाती है कस्टमर को, क्या वी आर सॉरी, योर ऑर्डर हैज बीन डिलेड, विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होता. उसको हम डेफिनेटली अलग कोवर्ट में डाल के अलग ट्रीटमेंट करते हैं. सो दैट मुझे पता है कि मैंने गलत कर दिया है, तो आई नीड टू मेक श्योर चर्न होगा. तो मैं प्रिडिक्शन पहले से प्रिडिक्ट कर लेता हूँ. इन सबसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि चर्न होगा नहीं होगा, या फिर कब चर्न होगा. उसके बेसिस पे हम कस्टमर का एक स्कोर डिफाइन कर लेते हैं, कस्टमर प्रोबेबिलिटी टू चर्न टाइप ऑफ अ स्कोर, एंड उससे हम चीजें डिफाइन करके वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस. These are the few advanced things. I would not recommend most of you because I have seen the comments at what stage you are at. I will recommend the 3 stages: the engagement stage, the second stage is the second commitment stage, and last is the loyalty stage. And on first 2 are the more important: engagement and the commitment. And then you can plan ahead. Cool. I think this is the last slide. Right. Thank you. Thanks for your time, guys. Any questions? I'm open for that. Let me check the chat as well. I think we have no question in the chat. We can open with 1 or 2 questions last. Though anyways, we are crossed time, but I just want to make sure there are any other questions. Oh, I'm sorry. No, it's perfect. We were, Abhishek, honestly, we had a great session from a learning experience. But I want to make sure there's any question yet not addressed. Are we all good? We are open to one question maybe, yeah, or maybe comment. Shilpa, how was your experience with the session, and maybe Prachi? Yes. Yeah, I just have to say thank you very much, Abhishek, because it was very, very insightful. Okay, and I mean, it's
it's just so much learning that you've managed to pack into a very short period of time. So thank you for all the and the examples of how you've gone about doing it in Mama Earth. And obviously Mama Earth is a shining example of how to do many things right in life. Okay, so I think it was very, very well done. And obviously we all have a lot to take away, a lot to imbibe, and hopefully we can connect with you in the future for more questions that we may have. Sure. Sounds good. Sounds good. If you have any doubt, anything, do let me know. If you need any help in terms of maybe structuring the brand story, how you want to pitch each and every, welcome to connect me over the, I think Sharad can share the communication details as well. You can connect me over the LinkedIn, and I think we can take things ahead. I will also do one thing. I think I missed that part. Yesterday, when I saw the feedback, I knew that most of you are on the Shopify and I should provide apps or the tools where and how you can execute that on Shopify. So we'll drop a detailed mail on the recommended Shopify apps. Maybe I will work over this weekend and let you know maybe by Monday or Tuesday, so that you can use the Shopify app as well. But happy to know any other feedback. I think I have received a couple of comments as well. Super session, Bharat, Aditi, thank you, Abhishek. Great, thank you. Give us a lot of work upon great session. Thank you, friends. Sure, sounds good. Perfect. Thanks a lot. So, last thing, and Karan, you have a question? Yeah. Last Yeah. So like, Abhishek, I wanted to ask, like, all these activities which we were like talking about today, like, from collecting all the customer data, like, how they like the product, how the journey has been, like, their reviews, everything. So like, I've understood that, like, we definitely require a CRM system where everything can be tracked. So like, would you recommend any CRM system? How do we go about it? And also the team which should be there, like, for like, e-commerce, like, is it a sales team? Is it a customer team? Like, what their core responsibility should be? Let me define the growth or the D2C team, revenue team should be defined, right? So there should be two verticals, as acquisition and the retention vertical. And acquisition team can be of one or two people. One person who is handling all the ad side on the Google, Facebook as a platform, and the second person might be working on and the creating the ads, communication. Is more of a creative guy type of a person. The retention team might also have the two people, and one person is mostly analyzing the data side of things. कि कहाँ पे क्या data track करना है and क्या data analyze करना है, and based on that क्या communication strategies होनी चाहिए, and one person might be working on executing these strategies, because from day one आपके पास because day one you are not very sure कि यार ये automation journey में चलेगी नहीं चलेगी, या फिर what should be the communication. So CRM में थोड़ा difficult होता है in terms of automation and everything, so it will take time, effort as well. So there are two people are enough, and the communication design part in terms of कि actually में how it should be written, your retention manager should be able to brief the content and creative person, and then they can take things ahead. And ideally एक Shopify वाला person होगा जो इनको थोड़ा सा समझा देगा कि okay, how this can be executed on Shopify will be well and good. So I think 4 to 5 people D2C team is a good enough. I think at around 1 CR per month type of revenue. Perfect. This is very interesting. Thank you, Abhishek. Okay, awesome. So great. I just want to summarize. Abhishek, thank you so much for doing this. All of the, I'm just repeating the session. It was highly actionable, great framework. To be honest, in your own words, we got multiple wow moments in this session, and to all which we can really implement for our businesses. Things about lifetime value, payback period, tracking improvement of our cohorts is something which we're going to go further deeper into modeling in the next session. My key takeaways are, in terms of taking feedback, I want to give a little plug here. Jacqueline or me will be reaching out individually to take individual feedback from all of you guys about your experience in the program, because we're sort of attending that in the closer ends. And please give us feedback on Abhishek's session, which we will share with him more directly after this call. So that being said, Abhishek, we have a way to say thank you to you. So what happens is everyone sort of turns on their video, unmutes themselves. We play some little background music, and you can join us in that process. We put our hands in front. So unmute everyone, yeah. We put our hands in front, and then we do 3, 2, 1, and in the end we do go team. So Abhishek, you want to join us? You can. Just put your hands in front. Yeah. And ready? 3, 2, 1. Go team. Go team, everyone.